Happy Diwali, everyone. We are back, and Happy Diwali. Happy Happy Diwali. Diwali. and I Happy would just Diwali. like to introduce the panel today. Happy We have Diwali. Diwali. We have with us Happy Mo. Finally, the bald eagle is down. So we have Happy Mo with us, and then below him we have Sad Neil, who is very sad that Walter White has finally left. And I think he's supporting the new manager already. Amiron sign हो He, गया? he's sad हाँ that he भैया doesn't have to gobble the we ball go. नोटिस immediately. नोटिस पीरियड सर्व कर रहा है वो अपने Notice कंपनी में. period, so okay. And then There is a we way have to with us, pronounce the name. yeah. His name is not So, Amorim okay. actually. Amori, Amori. And, Amori. Yeah, Rahul, let you're me the just last introduce person who Mayur. should try and pronounce names. Down. Calm down. And we in the dark we have Mayur, just like his club, which is in the mud. Please. And we have Rahul, who is representing all Indians today in his traditional dress, who is a supporter of Liverpool, and it's finally me, Varun. Here, hello. Hopefully, I'm the only one who uh, is in hopefully historic event traditional dress. traditional dress. Rest of Yes, all you can see are Indian dressings. These are what Indian dressing is. I think Rahul. Let us start with Chelsea versus United. Yeah. है ना? Because it's the biggest match, and we have a new manager who is joining. I think after, like next week. Is he joining next Ipswich. week? Ipswich के लिए आएगा वो. Okay, That is is that the after next the match? international break. After the मैं international फिर break. से इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है. हाँ यार. Yeah. After ये this, there's an कितने मैचेस है international. भाई? The hell मैन अभी तो हुआ था. हर 3 मैच में एक इंटरनेशनल ब्रेक हो रहा है. कोई पूरा मोमेंटम फ्लो ही नहीं बिगाड़ है. देता है. पूरा कोई मोमेंटम ही नहीं है. आई एग्री विद हमारा यू. पूरा पॉडकास्ट का कंटेंट भी चला जाता है. So let us start with United boys because the biggest news is that they have a new manager, Amiron, who's joining, I think, next after the international break. So guys, तूने तूने एमेरॉन बोला क्या? वो बैटरी है ब्रो. pronounce मैंने भी एमोरन ही सुना. मैंने भी एमेरॉन हाँ, सुना. Amiron ही बोला. Amori. तो क्या है उसका Amori. हमारी नाम है क्या नाम है Amori. एमरी Amori. एमोरिन. एमरी एमोरिन. Amori. गुड एमोरी इवनिंग. Amori. गुदीपरी एक महीना दे दो, ये मोहित विल बिकम अमोर आउट. वो चला ही गया छोड़ के तेरा जोक सुनने से पहले. इसीलिए मैंने Amor जानबूझ के out. वो गया. Yeah. So let Mohit fix his camera and mic. By Neil, you can start. How excited are you? Don't worry, he will be here before the new manager comes in. Excited, यार. I don't know if you guys saw the highlights of the Carabao Cup against Leicester. तो काफी पेला है लेस्टर को, फॉक्सेस को. 5-2 से we won. Good to see a new manager bounce and like a change of the entire जो पूरा ट्रेजेडी चल रहा था, मिजरी ऑफ फॉर अ लॉट टाइम, वो टॉक्सिसिटी थोड़ा ड्रेन आउट हो गया है. So it was Right. just glad to see a lot of positiveness around Old Trafford and fans were happy. Like Twitter पे Ruud Van Nistelrooy के posts आ रहे थे, things like that. So I think positiveness है थोड़ा, but at the end of the day, Premier League is still Premier League. मतलब you can win against Liverpool one day and lose against Nottingham Forest the next day. So Chelsea I think is in good form and Enzo Maresca तो मस्त मचा रहा है. So let's see if Nistelrooy का bounce stays for one more match. What do you think, Mo? Yeah, even that's what we worried about, the new manager bounce. But I think bounce हो Yeah, गया. before But like I before Mo starts, right? Like, did he change anything in the midweek game against Leicester? RVN yeah he did. tactics, Thoda. Sir, I formation. did not watch the match. अरे it was Mayur, it तो was तूने the नहीं देखा? Carabao Cup. पूरा Uh, B team ही It होगा was इनका. it was quite late. नहीं in the नहीं नहीं match. बी टीम नहीं खेला इन्होंने पहले ही बोलते थे. हाँ, bro, ने B team तो नहीं मैंने खेला. एकदम अलग सुना है. मैं एकदम लास्ट में बोलूंगा. I saw the highlights and I heard the highlights also, like review from a die-hard United fan.
उसका तो एकदम अलग था, बट मैं लास्ट में बोलूंगा, पहले इनका एक बार सुन लेते हैं. I think the highlights, like for me, I just want to mention one thing: the Casemiro first goal was Yeah, fucking amazing. insane. मतलब Amazing. ऐसा screamer I think United have scored after a very very long time. मतलब और ये And मैं also Casemiro have scored फर्स्ट after a very long time. वीक से मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीक से मैं बोल रहा हूँ ये सीजन के कि कैसेमेरो हैज अ शॉट ऑन हिम, और ये वो गाली बोल रहे थे जब कैसेमेरो बहुत सारे शॉट्स ले रहा था. आई वाज लाइक ही कैन शूट, और उसने अरे वो फर्स्ट Madrid सीजन में में भी खेलता काफी था. अच्छा हुआ. When he was in Madrid, हाँ, वो used ऐसे to score in Madrid. 6-7 गेम के बीच में एक गोल ऐसा मारता था और ऐसा मारता था कि वो नेट फट जाए. बट एनीवे, शायद So, इस चीज को रोक रखा मैं- हो, मत मार इसे, तू डिफेंड कर. So, नहीं ऐसा नहीं था. It was like a, I don't know, I'll come to it, I guess. जो मैंने 50-60 मिनट में देखा रूड मैच के, and it was a very 1:30 बजे मैचेस चालू हो गए guys because of daylight saving, so it's kind of difficult to watch those matches anymore. Like Yeah, agreed. especially for people who like me, who want to get up at like 6:30 to catch the gym. I think that's going to be impossible to catch those games. But जो मैंने देखा 50-60 मिनट में, राइट, मेरे को गाइस पहले तो मैं दारू पिया हुआ था, तो थोड़ा तो उसके वजह से नींद आ रही थी. उसके बाद मैं रेड बुल तो नहीं, मॉन्स्टर पिया, तो भी मैं सो गया, मतलब 50-60 मिनट बाद, बिकॉज मैं सोचती थी. Getting to I'm the just point. gonna put up the lineups. So what he changed, right? And what he changed and what worked for us, like versus, let's say, your ETH, was, I think he gave a little more freedom to Casemiro, and he finally started Ugarte, and Ugarte did what Ugarte was brought in to do, which is, get about the pitch, be the guy who tackles everyone, and give a little bit of more freedom to Casemiro. Ugarte had a man of the match performance, by the way. हाँ, मतलब, see, if it wasn't clear, this now makes it clear that Ugarte was not ETH's signing. As soon as ETH leaves, Ruud van Nistelrooy starts him, and he gets an amazing, performance out of Ugarte. And Ugarte was everywhere. Like, he was trying to tackle people. Casemiro got more freedom to go ahead, take that shot, and come up with a screamer. And I just feel that it was like a weight that lifted over the players, that okay, we don't have to. I mean, there's something holding them back. And what I heard from people was that ETH system was a little more complicated. He had a lot of instructions that he gives to his players. And Ruud van Nistelrooy and came in and just said that, bro, keep it simple. हम लोग counter attacking football खेलेंगे, which is our game, and just keep it simple, don't complicate it. And it's just Leicester at the end of the day. I'm not going to get happy. It's just Leicester, a true test, and the test is coming too soon for Ruud van Nistelrooy, is Chelsea, like right on the weekend. So we'll see what he does, what he's capable of. I just, before I go on in length about this, I just want to confirm one thing, guys. My curse is real for sure. No two ways about it. If I buy a jersey with a name on the back, may it be the coaching staff as well, they are going to leave. Like, so मैंने आई थिंक ये सीजन के स्टार्ट में बोला था कि मैं कोई अभी प्लेयर्स की जर्सी नहीं लूंगा, और मैं रूड वैन निस्टेलरॉय की जर्सी लूंगा, बिकॉज दैट गाय इज गोना गेट अस बैक इनटू द चैंपियंस लीग, एंड फकिंग रूड वैन निस्टेलरॉय इज लीविंग. It's not confirmed that he's leaving. Huh? He will leave. Yeah, doesn't make any sense, Amiron, to have a assistant coach that he doesn't want. Stop saying Yeah. Amorim, he's not a battery. यार because the thing is that जब Yeah. ओले आया था ना, Emiron, Emiron. when Ole had come Amira. to Amorim, Ruben Amorim. Emiron, when Ole had come, he was forced to keep Carrick as his assistant. So I think that is something that can happen. Like, Yeah, so पता, I wouldn't want to say कि क्या उसको रखना चाहिए कि नहीं. Obviously, I love Ruud van Nistelrooy, but if, like, imagine this, Neil, you get like मेरे साथ ये तो हुआ था, like when I was doing a job,
I was bought in as an ASM, and for a while there was no city head for my team. I worked with my team for like 3 4 months, and I think I did a good job. Um, After a while, there was a city head that was appointed. I felt a little bad here when I did decent perform kiya hai and why we are getting a city head. But it was made clear that I won't be promoted to that space anytime soon. So and मैं ये खाली बोल रहा हूँ कि if you have performed well and you suddenly dip in form, and if you have that option of going back to the guy who did perform well for like those 4 5 games, there is a tendency that you could go back to that guy, and I think that will only undermine the current coach in there. So I don't think this should be an option, and I think that option has been taken away from us fans. With Ineos, they've done a good job. They just took that option away. Like we could have said that let's give RVN good 3 4 months. We'll see if there are coaches available. Ineos just went in, got the man that they wanted, and just closed the deal. So I think that's heads. I mean, good good that they did that. Like we they were saying that we will only go for managers who are not in a job right now. We are going to try and save money on that, but they did not. Like they did not compromise. I don't know. I mean, I haven't seen Amiran's teams playing, but there's one thing for sure that he was one of the highest. What do you say? Highly rated, managers in Europe. So I don't know how he does. मैं अभी सिर्फ लोगों के पॉडकास्ट ही सुन रहा हूँ कैसे खेलता है. He plays in a 3-4-3. Does not which could suit us. We have a lot of defenders. अभी we were thinking ना कि इस तरह defenders को कहाँ खिलाएंगे. So now we have a manager who will play with that. So yeah, let's see how it Yeah, but does. I think my thoughts on Nistelrooy is कि Ineos have brought him in 2 3 months back. So if Ineos were to ask him to leave, then there's also the severance that they need to pay him and Rene Hake. So I think थोड़ा तो सोच समझ के Ineos ने भी plan किया होगा that यार because आई I'm डोंट pretty थिंक टू पे दैट मच. अगर तुम एक असिस्टेंट मैनेजर के जॉब पे किसी को लेके आए हो तो आई डोंट थिंक तुमको इतना देना पड़ेगा उसको. लाइक मेन हेड कोच तो नहीं है और वो यही समझ के आ रहा था. तो आई डोंट थिंक यू हैव टू पे देम दैट मच. पैसा होगा, आई एम सेइंग नहीं. बट इफ सी रूड वैन निस्टेलरॉय इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स नेम, राइट? बट आई डोंट वांट हिम टू लूज. बट आई फील इट्स ओनली राइट इफ Amorim is not really comfortable. अरे भाई what the fuck is that? Oh fuck. Are you कोई okay? कौन Guys, counter guys, we are not in America. We are in India. It's Diwali week. So It's the Diwali, yeah. So you'll hear firecrackers in the background. That's normal. yeah, so Okay. those are not gunshots, so don't worry. we are not sitting in Brooklyn or Harlem. I mean, we Anyway, all are in India, not in US or Baghdad. okay. Or also So anyway, moving forward. So what I was saying was that if I think Ineos have done a like they made the right choice by not keeping him. If they decide not to keep him, I think it'll be right. It'll be a right decision. I wouldn't want Ruud van Nistelrooy, even though he is one of my best favorite players. I wouldn't want him around because भाई हम लोग एज फैंस have tendency कि रूड वैन निस्टेलरॉय तो क्या खिला रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था. लेट्स लाइक कीप हिम. क्यों नहीं किया इसको निकाल दो. but I हाँ पहले think किसका going मैनेजर है. but I think in the next 2 3 weeks, even Ineos and Amorim will see what he has to offer. So if he like But puts up not as a head coach. They will want. I mean, assistant he manager, assistant. Yeah, Amorim will have his own assistant. Yeah, see, देखो You यार guys कुछ already, guys, you are guys already paid the release clause for the staff as well. मैं हाँ मैं वही बोल रहा हूँ कि 2 assistant manager हाँ. हो सकते हैं. It's not like अभी भी टेनहाग के साथ स्टीव मैकलरन एंड वो टकला वैंडरगार्ड दोनों थे. So it's okay for Amorim to have 2 assistant managers. Even Like, so, Alex guys, Ferguson. we will come back to this. Sorry to cut you off. We will come back to this. I would like to hear Mayur's thought on the match as well. So, sorry. Yeah. I don't think he Mayur. saw the rest of the match, right? Firecrackers.
नहीं, not about the we Leicester match तो ठीक है मतलब, but like what I'm hearing is लेस्टर you का guys क्या, did मैंने not चेल्सी talk का भी about. मैच नहीं देखा. नहीं, sorry guys, I have to cut you off, but main thing is कि just want to know कि we'll move on to the Chelsea United game. That's what people want to hear about, Yeah. and we'll build up to that. So Mayur, you can start with that. Oh, Rajni Yeah, is so Yeah. unwarranted change in United's here. management. Happy So, Diwali. Happy Happy Diwali, Diwali, Dilulu. happy Diwali. Happy Diwali. Yeah. So, Yeah, Mayur, yeah. and good that he had a good win in the Carabao Cup, right? So, don't know if the bounce will follow through to the weekend, but let's see. Usually the bounce does last I for mean, about it'll be 2-3 matches. I've seen 2-3 I'm matches तो expecting bounce होता ही होता है. it to be a tight game. Atalanta has about. Yeah. Mm. So what are you looking forward to basically? Like, क्या is Mayur stuck or am I stuck? He's He's getting stuck, he's stuck. Mayur, yeah, Mayur, I'm gonna remove you. You can just fix your internet. Mayur Yeah, is so guys, stuck in United's bounce. yeah. So guys, तब तक Neil, what are you like looking forward to against Chelsea? I think a draw also would be good because considering the Premier League form of United in the last couple of matches has not been great, and Chelsea on the other hand, वो लोग सब टीम को पेल रहे एक एक करके. So I think even a draw, I would be happy with it because it would be an improvement. But यार ये new manager bounce का थोड़ा फायदा उठा लेना चाहिए, and Leicester also were not like some Wrexham या random 4 tier team, वो भी Premier League में खेल रहे हैं, and they also put up a pretty decent team. So I think 5-2 scoreline was quite like saw the highlights and everything. The way the players were playing with much more freedom. Bruno had a good game. So I think Van Nistelrooy will bring that attack mindset thoda thoda in the teams and tactics. So looking forward to the game, but not sure whether a win is on the cards. Guys, अगर RVN goes on a run, let's say कितने matches हैं till the Ipswich match? RVN has Three 3 more games. matches. Three games. 3 games, right? So if he wins all 3 of them, he's already won one. Okay, and he's got 2 more. One against a very in-form Chelsea, and the next match is Europa match again. I don't know. I have to see which. Probably a Europa match. PAOK. Okay. Okay. So if he wins all 3, तो बाद में फिर तुम लोग को regret होगा कि यार इसको क्यों, जैसे I remember you guys had a good run when Carrick was in charge before. Carrick played for 2 games. We did not lose any of those 2 games. He played well, but there's no regret. It's okay. Yeah, Varun, ठीक है. same चीज ना ओले के टाइम पे हुआ था. Like Ole was not given a permanent manager role. He was brought in as an interim manager कि until we find a new permanent person, Ole थोड़ा देख लेगा टीम को. And फिर Ole went on this great run of matches और उसको permanent कर दिया. तो यही है यार, basically these are the things we are worried about. ये हमारे लिए same हो गया, like it was against Liverpool, right? Unknowns. Even though United has not been playing well in the league and got the manager sacked, right? DTH sacked. But now it's Yes. new manager bounce and whatever these guys mentioned, right? Whenever they had interim Yeah. managers, they went on a good run. And to be honest, our defense has been really shaky. Like even if I saw the highlights of the Carabao game, Bishachi का own goal and वो क्या है उसका नाम, बादेशिल को कैसे वो भाग के चले गए, could not recover there, and even though they don't play in the league, but overall our defense is pretty shaky यार. मतलब I don't have the confidence there. Attack is pretty good, but attack is pretty good. मतलब वही है, this will be a good test. जैसे even United also conceded 2 goals, right, in the Carabao Cup. Also, one thing that I noticed in the Carabao match, जो stadium का atmosphere है Old Trafford में, वो full Van Nistelrooy, like they have his back, and वो जो ओले के टाइम पे vibes, no tactics वाला scene था, it's the same thing with Van Nistelrooy. मतलब club legend है, the next level. so they'll back him. Home game है ऊपर से, and it's an Old Trafford. When Casemiro scored that goal, उसका celebration ऐसा था कि उसने खुद गोल मारा है.
हाँ एग्जैक्टली, बहुत एनिमेटेड था, कॉन्स्टेंटली टीम के साथ साइडलाइंस में ही वाज इन टच एंड celebrating the misses and the goals and So everything. these little things, right? Sometimes they are the difference between the Yeah, win yeah, Yeah, definitely. absolutely. Yeah, and absolutely. That mentality. charges the team up. It It charges the charges the team team. up. Yeah. Like, So it will Also, be It interesting honestly to charges see. the speaking, crowd up. if एक चीज tactically होगा if you कि see Chelsea, yeah, tactically if you see Mayur, you guys are much in a much better place than what United are. On Oh, paper, you should definitely. beat them definitely. But अगर On वो paper, yeah. vibe वाला आ गया ना, only vibes, no tacticism, Only you can vibes, no decide not. tactics. नहीं वही है Yeah, यार, so मतलब बहुत then सारे it's factors वही I है mean, खाली. अभी are मतलब in United's favor now. कैस एक Because एक 3-4 दिन में कोई tactics change नहीं होने वाले हैं. I think it's एग्जैक्टली only No, about how people are going to, react to Mentality यार, हाँ. taking and They'll and be take their charged up. chances above all. लेस्टर वाले या गेम में तो यूनाइटेड वे लकी, 2-3 बहुत ऐसे गंदे गोल गए थे, बट दे वर अप फॉर इट, लाइक दे had more shots, they had more, got into final third. डालो वाला शायद ऑफसाइड लगा मुझे, आई डोंट नो वीआर था कि नहीं वो मैच में, बट VR डालो नहीं वाज था. टू ऑफसाइड आई फेल्ट. Chelsea वाले मैच में VR नहीं. Chelsea fans were also complaining VR नहीं था. अच्छा, क्योंकि डालो बहुत ऑफ लगा मेरे को, ब्रूनो वाला भी बहुत विकेट डिफ्लेक्शन वेंट इनटू द गोल. आई एम नॉट डिनाइंग कि भी कुछ था नहीं अच्छा, बट इफ यूनाइटेड टेक देयर चांसेस दे कैन डेफिनेटली ट्रबल चेल्सी. यार सी आई टेल यू व्हाट रूड वाला चलो एक चीज तो है, ही इज अ क्लब लेजेंड राइट, तो द फैंस आर बिहाइंड हिम इवन इफ इट्स फॉर Exactly. लाइक 3-4 weeks. Old Trafford crowd, if it gets to what they are, they play like a 12th man. Like, it does play like a 12th man, Yeah, yeah, yeah. in No, agreed. players. And Leicester was a second string team, okay? It was like दो player थे उनके starting 11 से. So they were not up to it. So I'm not taking this win as end or up. I am just enjoying it as a fan. I'm enjoying it as a Ruud Yeah. Van Nistelrooy fan. I am enjoying it as a United fan. All right. With These that, three tell you very teams, honestly, if अगर ETH के अंदर भी अगर if you had got few results ना, तो you would have been in a better mindset, और उसमें just the results when they start coming, it doesn't matter कि क्या टीम कैसे खेल रही है, भाई क्या है. 5 गोल मारे यार, 5 गोल हम लोग ने पता नहीं कब मारे. एक अरे मिनट हमने पूरे प्रीमियर लीग सीजन में बार्नसली, शायद 7 गोल मारे होंगे। भाई बार्नसली के सामने 7 मार के बैठे हो. You guys have scored now 13 goals in the Carabao Cup. प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि इट्स आई अंडरस्टैंड व्हाट मोहित इज सेइंग कि लाइक तुमने 5 गोल कमाए, तुमने अभी 7 गोल मारे थे बार्नसली को, ठीक है. अरे तो बट ऐसा नहीं है लेस्टर कि कहाँ बार्नसली कहाँ, दोनों में डिफरेंस तो है ना थोड़ा। हाँ पर भाई, नहीं, बोल रहा लेस्टर भी सेकंड कुछ स्ट्रीम इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे. अरे हम सेकंड भी स्ट्रीम 14 टीम थे थी. यार। अरे हम लोग यार, पहली बात तो गाइस, हम लोग 14 हो गए, stop लेस्टर 15 हो गए। stop building bullshit cakes out of anything. हम लोग ने कुछ बोला नहीं. we're not saying कि हम लोग ने बहुत जोरदार नहीं टीम नहीं, बोला मैं है. अरे मैं तो तेरा वो बोल रहा हूँ. आई एम बैकिंग यू. आई एम सेइंग कि यू डिड स्कोर 7 गोल्स. आई एम नॉट सेइंग नहीं, यू गाइस डिड नॉट. मैं राजवीर को बोल रहा हूँ. राजवीर की आदत है ये सब करना, ठीक है, but okay. Anyway, so we are not making any bullshit cakes or puddings. हम लोग को पता है हमको ये मैच, और यार we don't have any tactics. It's like वो good vibes ही खेलने वाला है. एक उसको पता है 3 weeks में क्या tactics install That will be the करेगा. difference. Let's see how it goes. Yeah. Yeah, that will be sometimes our team is just in the mood और उसमें, and then just goes through. भाई और ये Just doesn't निस्टेल matter. रॉय I'm just happy my manager has hair. Like अगर मैं शायद विग लगवाऊंगा तो मैं रूड वाले सुराय की विग लगवाऊंगा, तो इतना अच्छी बात है. और वो भाई But साहब कुछ भी गोल बोलो. मारने के बाद उसने अपना वो वाला सेलिब्रेशन किया जब वो खुद गोल मारने के बाद करता था, उसमें तो क्राउड पागल हो गए. आई थिंक कपड़े अपने निकाल दिए लोग स्टैंड में. यार कैसेमीरो का गोल वाज अ वर्ल्डी. I loved अरे that goal. amazing, and he's Amazing. capable of that. He scored some Yeah, worldies for us. I didn't know he could do that. वो मैड्रिड में करता था ऐसे once in 10 He's done it for Real Madrid, but He's done it for United as well. First पता season है, was must goals मारे. Rajveer, Casemiro and मतलब it's like even Partey tries to take those shots outside the box. कितना attempt करता है, Yeah. सब गालियां ही देते हैं, क्यों ले रहा है, why are you hitting, and then when he does score those goals सब लोग पागल हो जाते हैं. So वही है कि Casemiro also keeps trying it, but those goals are like not percentage wise, they are not gonna go in always. I know we all love a screamer, we all love an outside goal, but if you look percentage wise, so it's like not a those don't go in too often. Like 5-6 match में maybe 7-8 matches में एक बार जाएगा अंदर. Then you remember और those goals tactically more भी than the मतलब ones.
क्योंकि टीम्स हाईलाइट खेलती है, अब स्ट्रीमर्स का जमाना थोड़ा कम हो गया है, तो कम हो गया, गुड टू सी इट वंस इन exactly. अ वाइल. Yeah, absolutely. It's always, पता है फिर ये सब goals ही होते हैं, फिर goal of the month तुम्हारे पुस्कस ही बोलते हैं, if I'm not उसका so कोई, Puskas. yeah, yeah, Name yeah. of the player. So guys, what's the scoreline that you guys are expecting? Let's start with the home tricky boys. one. Yeah. Home boys can start करते, then we'll go to the away team. Mohit, I will go for. It's going to be a tight match. I'm going to go for 2-1. Ruud Van Nistelrooy why to is the score. ninja क्यों दिख रही है हमको बार-बार? She comes from the shadows. She disappears in the shadows. She is always sorry, Mohit. behind me. रेफरी उसको पॉइंट कर रहा था. Yes. I have to hear it. Yeah. Hello. Yeah. Anyway. So 2-1. Ruud Van Nistelrooy to score. I can't turn the lights. Ruud Van Nistelrooy to score. Can turn on the night lights. Yeah, Neil. 2-all. 2-2. So you're still expecting a draw. Yeah. Still, I think Enzo is doing थोड़ा तो मचा रहा है वो, थोड़ा कुछ तो करेगा वो भी tactics. Because we only have vibes अब यार, एक मैच में क्या चेंज करेगा वो? बस टाइम भी कम है. Like you guys had a match on Saturday, Thursday. And what is his motivation also? मतलब you guys see ना कि he ultimately has to either leave or get demoted or something after 1 or 2 matches. Someone else has already been finalized. तो तुम्हारा motivation क्या है मचाने का? क्या ही बस करोगे? just leave on a high, Just man. passion सब लोग for the give club, some, yeah. passion, yeah, exactly. Could be that. And मतलब probably as a job, like it's an interview or like for any other job, like any other team might see that he's got it, so they might end up hiring him. So yeah, I think थोड़ा तो incentive Probably, yeah. Why not? Yeah, Mayur. We have a win by Mohit and a draw by Neil. I'll go with a narrow 2-1 win for Chelsea. Yeah, I don't that's the know, yaar. spirit. मतलब it That's could the also end in a spirit. draw, but yeah, just backing my teams. नहीं मैं आप पता है, आई एम एक्सपेक्टिंग अ हाई स्कोरिंग मैच. मेरे को लग रहा है एकदम पिंग पोंग होगा ये मैच, मजा आएगा. क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि आई थिंक यूनाइटेड होम पे है, फर्स्ट मैच है आरबीएन का प्रीमियर लीग में अगेंस्ट हो सकता चेल्सी. है. तो I don't think this will be a KG match. I don't hope this is a KG match. Yeah. And both teams don't have the defense to even have it KG. It's going to be like 3-2, 4-3 जैसा कुछ. Also United Chelsea का जो वो rivalry है वो थोड़ा dilute हो गया है अभी. कम हो गया, yeah. मतलब Back in the day, the rivalry was amazing. Yeah. हाँ, मतलब when I started following football, Chelsea were one of the biggest rivals for United, but वो अब ऐसा नहीं है. हाँ, उस टाइम पे आर्सेनल वर डेड, लिवरपूल भी में, तो ये चेल्सी थी, एंड देन सिटी वर जस्ट कमिंग. या ड्रॉगबा आके चुतियापा करता था, ये वो माइक को चाटता था, के कैमरा को चाटता था, ये सब. गाना मारने के बाद. हाँ, माइक को चाटता था, कैमरा को चाटता था. सॉरी, कैमरा. हमारा स्टीवन जेरार्ड बुरा मान जाएगा यार. ओल्ड ट्रैफोर्ड में चुम्मी मार के गया. ये लोगों ने क्या इनिशियली क्या बोलते बीमारियां फैलाई हैं, फिर बाद में हम लोग वो ही उसकी हाईलाइट है. But sadly, Gen Z only remembers Gerrard for the slip. The highlight is great enough for Arnold to follow that, so I'm happy with that. To score a goal which was not even counted, of course. Counted. That's okay. 3-0 तो हो गया था. बट उसने तो नहीं किया ना कुछ, बस हिला रहा था अपना कैमरा के आगे. हाँ वही ना, 10 लोगों ने मार दी ना तुम्हारी. चलेगा, मेरे को जरूरत नहीं है. तेरे को क्या जरूरत है? It was all part of the plan. हमको ETH को निकालो. हमको जरूरत थी 3 पॉइंट्स की, तुम्हें जरूरत नहीं थी 3 पॉइंट्स की. Thank you helped us remove ETH. Thank you. Yeah, any day. तुम्हारा काम हो गया तुम्हारा ये सीजन. हाँ. Lot of teams contributed. Now just fail as you always do. Soon Amorim भी हो जाएगा. एक पॉइंट पर चेल्सी में भी सही प्लेयर्स थे. Like I really loved Michael Ballack. बहुत सही प्लेयर था यार. Ballack was awesome. Ballack था, डेको था, एसियन था. Essien. फिर
तेरा ये रिकार्डो एशली कोल था, रिकार्डो कारवालो, सालमन कलू। जॉन टेरी था, बोसिंगवा था। सालेमन कलू भाई बोसिंगवा यूनाइटेड के सामने हर बार ही गोल मारता था यार वो आदमी। और वो कौन था वो मलूडा, फ्लोरेंट मलूडा। मालूडा। फ्लोरेंट मालूडा। मैं मजाक नहीं कर रहा है, No, no, और मेरे good ये आए players थे, हैं। मेरे ना फूफा जी आए हुए थे दिल्ली से, ठीक है, और अलेक्जेंडर मैं पाटो मैच भी देख रहा था। खेल चुका है चेल्सी में, पता है। वो तो फेल हो बहुत गया अच्छा था। था वो। मेरे फूफा जी आए हुए मतलब थे दिल्ली स्ट्राइकर्स से हमने सब ट्राई कर लिए। मतलब जो टॉप हाँ, हैं। मैं मैच देख रहा था, दिस इज लाइक लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक है ना, टीवी पे जब मैच देखते थे अपन, मतलब यू नो ऑन सेट टॉप बॉक्सेस एंड शिट। मेरे फूफा जी आए हुए थे, वो चेल्सी का मैच चल रहा था, तो बोले एक कौन है माका ले ले और माका लौड़ा। माका ले ले। बट ड्रॉगबा के बाद से कोई भी स्ट्राइकर इतना, मतलब डिएगो कोस्टा डिएगो के अलावा और कोस्टा कोई चला नहीं है। कोस्टा रहा है, कोस्टा दैट हाँ वही, कोस्टा Costa was good. उसके बाद Costa थोड़ा कोस्टा के मतलब अलावा कोई चला नहीं है। कोई चला नहीं इतना। जैक्सन इज That was the doing last time you pretty guys decent. won the अभी Premier League. हाँ, अभी If you look at the जैक्सन numbers, शायद Jackson is very decent. जैक्सन Okay, I कर mean, सकता है यार। जैक्सन numbers can do wise, Jackson का some। क्या मतलब पता है, he gets into right place at the right time. He right place has पे, that, exactly. yeah, उसका वो finishing आ जाए ना तो उसका बहुत सही contribution हो सकता है। फिनिशिंग भी लास्ट सीजन से बहुत इम्प्रूव हुआ है, मतलब ये बहुत सीजन में improve बड़ा है, बहुत yeah, सही। yeah, absolutely. कोस्टा तो क्या क्या करता था यार, वो नाक से शेमबुड निकाल के प्लेयर पे वाइप कर देता था, ऐसा सब हाँ, करता था। अरे वो ब्राजीलियन स्ट्रीट तो प्लेयर था यार वो, हाँ, लाइक वो एड्रियानो की तरह, मतलब रॉ तो एकदम। ब्राजील का था कि स्पेन का था वो, आई थिंक चेंज ब्राजील समथिंग, का कुछ था, कंट्री He चेंज changed, किया he था नो changed. उसने। ही ब्राजील His का था, nationality is he Brazilian. changed to, Brazil. he did not get a भाई chance in, क्योंकि ब्राजील इज लाइक जीतता जीतता तो है नहीं ब्राजील। नेमार नेमार करते रहते हैं, कभी I आगे know, तो they बढ़ are- नहीं रहे जिंदगी में, तो भाई जब चला वो लोग गया। जीत सकते थे अपने घर पे तब इतनी बेइज्जती करा के बाहर गए थे। मतलब हाफ टाइम हाँ पे आपको जर्मनी का वो प्लेयर्स आके बोल रहे हैं कि हमने हाफ टाइम पे बोला इनको और बेइज्जत नहीं करना इनके घर पे। मतलब आपकी जब Fair ऐसी enough. हालत हो तो आप क्या ही बोल सकते हो। देखा तो होटल में पता नहीं क्या सांप और ये सब, क्योंकि अमेजोन फॉरेस्ट ज्यादा दूर नहीं है वहां से, तो फिर भी सब कितना डाल 8 के गोल रखा मारे थे होगा इनको। वहां पे। हाउ मेनी डिड दे 7 कंसीड? था आई थिंक, 8? 7 था। 7 or 7 8? है, I don't know. 7 or 8. 7 8. It was 7 such a 1 था शायद। ridiculous, such a ridiculous scoreline for a home team, वो भी at the level of या Brazil. वो भी या like it's ridiculous in a World Cup. Yeah, guys, चलो let's move on to the next match. Or और do वो you guys want to talk? थोड़ा ऑफ टॉपिक है, बट डिड यू गाइस सी Ma- द वीडियो ऑफ वैंडन वेन सिटिंग इन हिज पैंट्स? दैट्स no, नॉट that's Oh, fake. शिट yeah, यार, व्हाट इज was रॉन्ग it विद यू really गाइस? shit? Was नो it really इट्स shit? या यार वहां से एक ही चीज निकल सकती है ना, और क्या निकलेगा, अनलेस Okay, but अरे पर probably वो he वो slipped, स्लाइड मारता he रहता got है a यार, वो hamstring मड है। injury. इट्स अ हाँ, मड तो गाइस। अरे hamstring बहुत खुला hamstring हो with गया the था पीछे। अरे मड है यार। अरे तो पानी होता है वो ना मड हो नी सकता है, लॉजिकली हो सकता है। हाँ. By the way, I'm predicting a 3-2 win for Chelsea. अच्छा, yeah, I I did not think ask it's you going to guys. be Yeah, it's going to be a yeah. goal scoring match. I think United will play with no fears, but I feel just the edge I giving to Chelsea is because they are in a great form right now. United का defense थोड़ा Yeah. shaky लगा मुझे. But I think what इनका is the long term ठीक ही है यार। partnership Ruud van Nistelrooy is looking for? कहाँ पे Triple S दो सेंटर बैक्स कौन से होंगे तुम्हारे? there is nothing long term for Ruud van Nistelrooy. He is not going to be there for long. वो एक दो मैच का मेहमान है। उसको उसका घर का डिपॉजिट भी मिल गया है। अभी तो तेरे उसको को बड़ी चाबी पड़ी वाबी है उधर उसके घर करके के कर डिपॉजिट देगा। के साले। तू काम कर, तेरा तेरे को क्या लेना देना उसका घर का भाई तूने डिपॉजिट। तेरा वो बकबक चिढ़ा कर लिया होगा. ना, राहुल तूने वुड तेरा बी यूनाइटेड का मंत्र बोल दिया ना अभी। भाई वो एनोइड है, तुम लोग एमोरिम ले गए उनसे, फिर शायद ये भी नहीं जा रहा उनके पास. हमने Zubimendi is रिजेक्ट going किया to ना, City. हमने ना, रिजेक्ट किया ना। Amorim rejected you. आगे He है क्या, rejected तू you. जाके देख। अच्छा ऐसा? वी रिजेक्टेड। हाँ, यार Oh. उसका देखो मेन ऐसा उसका ही होता है। वो 3 सेंटर बैक का उसका एक वो था, और मेन और लिवरपूल बोले हमको ये लोग जीतना नहीं है कुछ, इसलिए हम लोग को लिवरपूल ये के नहीं पास, खिलाना। लिवरपूल है, हमारे पास 2 ही है, 3 कैसे खेलेंगे? हमारे पास एक ही है वीवीडी। तो राहुल, ये your prediction? 2 जन के लिए खेल सकता है, 3 जन के लिए नहीं खेल। यार आई एम गोइंग 3-1 टू चेल्सी। 3-1. आई थिंक हाँ, Quite मतलब possible, देयर man. इज नो डिसरिस्पेक्ट टू यूनाइटेड, बिकॉज कोई रिस्पेक्ट तो है ही नहीं, भाड़ में जाए लोग, बट चेल्सी इज इन क्वाइट अ गुड फॉर्म. Nickel Yeah. Jackson and Cole Palmer will be looking for this thing, Sure. and
ना कुछ इतना कोई ग्रेट क्वालिटी है नहीं यूनाइटेड में, इज व्हाट आई एम बिलीविंग इन। ना बिल्कुल बिलीव इन और तुमने चेल्सी का तुम लोग डिफेंस को थोड़ा शिट है, थोड़ा सा शिट है, तो मे बी शायद बट यू डोंट बिलीव इन न्यू मैनेजर बाउंस। यार आई डू बिलीव यार, बट द होल स्क्वाड तुम लोग का इतना कुछ ग्रेट नहीं है चेल्सी के कंपैरिजन में, इज व्हाट आई एम चलो सेइंग। देखते हैं। वो तो स्क्वाड में तो चेल्सी को कोई बीट नहीं कर सकता। हाँ, नॉट इन हाँ, नंबर ऑफ प्लेयर्स, 1.5 द बिलियन क्वालिटी। खर्चा करने के बाद तो हाँ हाँ मतलब इवन क्वालिटी एंड नंबर दोनों में बीट नहीं कर सकता कोई। हाँ, सो आई थिंक कोल पामर, निकल जैक्सन, नेटो और And तुम्हारा Palmer is well rested. He didn't काइसेडो, play in the Carabao Cup. लाविया आ जाएगा ना मयूर, लाविया आ जाएगा ना, Lavia भी खेलेगा. लाविया आ जाएगा तो लाविया यार काइसेडो का मिडफील्ड होगा। टू क्या गुड करें। मिडफील्ड यार. एनकुंकू But नेटो। yeah, Old Trafford will be buzzing. That Yes. too much noise will be there. A lot What of time is the match? 10 10 बजे o'clock in the think it's Sunday. Is it Sunday? संडे Sunday, 10 I Sunday. hope it's late. Late हो तो ज्यादा मजा आएगी. 10 10 PM बजे है। है। 10 बजे. First match, that's it. It's an evening Yeah, kickoff. anyways, I am predicting a 4-3 win to United. I think it will be a big scoring match. Vibes ले ये जाएंगे हुई ना last बात, तो बाकी सारे लोग पुसीज last है, में. बोलना नहीं चाहते, स्पेशली वरुण तेरे को पता है ना, 4 गोल के लिए 4 प्लेयर चाहिए यूनाइटेड से मारने। Well, I don't know, मतलब इतना मेरे को ओन लग रहा है चेल्सी इतना ओन देख गोल भी Rahul, नहीं Rahul, मारेगा। Rahul, honestly speaking, Dallo is the reason why ETH is not in a job right now. उसने जो वो घटिया मिस And किया है ना, Oliver. Don't forget he- this guy, Oliver. अच्छा, आई एम सो हाँ ग्रेटफुल यार, वरुण, actually तू that पहले के मैचेस नहीं लेकर आया, स्पर्स, पर लिवरपूल, ब्रो उसमें लाइक आई अंडरस्टैंड यू ब्रेडफोर्ड। सेइंग कि पहले के मैचेस, बट आई थिंक सैक करना होता तो कर देते। आई थिंक ये वेस्ट हैम वाला जो मैच था ना, आई थिंक इट वाज इनफ। मतलब कितना पॉइंट्स तुम लोग लूज करोगे, एंड प्लस इट्स द प्लेयर्स आर मिसिंग। कैसे चांसेस मिस कर रहे हैं यार। दिस इज नॉट द फर्स्ट गेम। द इसके पहले मैच किसके सामने था तुम्हारा, दैट यू गाइस But वन? you tell me one thing, Varun, what is to do with Ten Hag over here? ठीक है, वेस्ट हैम मैच में टेन हैग की क्या गलती थी? नहीं, In गलती नहीं है ना, fact, पर मैं बोल रहा हूँ whatever प्लेयर्स the प्लेयर्स United were कन्वर्ट नहीं कर doing, रहे हैं यार। प्लेयर्स गोल्स exactly. कन्वर्ट ही नहीं कर रहे। But So that has I nothing to do understand, with but Ten Hag, so ना? what will you do? Will you remove the players that you just bought We this cannot. season? No, I'm not saying Ten Hag को Exactly. निकालना तो नहीं, बट that's राहुल a ये जो good तेरा decision only. ब्लाइंड अग्रेशन है, ये मतलब कि टेना की क्या गलती थी, बट ही इज अ फकिंग मैनेजर एट द एंड ऑफ द डे, ही इज I Exactly. know, रिस्पांसिबल but फॉर। And he see, should when coach it is these not players getting better. ओके, converted, आई मतलब कुछ पॉइंट नहीं है ये बोल के, बिकॉज Also, एट द एंड ऑफ द डे उसके ऊपर ही आता है। ऑलराइट, also तो what और फिर किसका उसकी क्या गलती थी, क्या फिनिशिंग पॉइंट है? फिनिशिंग प्रॉब्लम है तो दैट इज डाउन टू द मैनेजर. तुम ट्रेनिंग पिच पे जरा उसके ऊपर वर्क करो. नहीं, also एक इट इज और वेरी ऐसा सिंपल. I नहीं read है। somewhere कि I mean, ETH used to just take an additional training session. अरे तो वो चूतिया क्या करता था कि कि अगर मैच हारते थे तो इफ द नॉर्मल हम्म, रिपोर्टिंग टाइम वाज 8 AM, तो वो उनको 6 बजे बुलाता था। तो एवरी टाइम द टीम वुड लूज, तो वो लोग का पूरा बर्नआउट और एनर्जी पहले हो जाता था, और ट्रेनिंग जितना ग्राउंड पे. ज्यादा That's what I तो read. Yeah. वो साइक्लिकल इफेक्ट, क्योंकि तुम फिर प्लेयर बोल रहे थे कि हम थक जाते और अगले दिन मैच है, और फिर वो चूतिया बोल रहा है कि तुम हार गए। बोला अरे बड़वे, तू ही तो हमको सुबह 5 बजे बुला के मरवा रहा था। मेक सेंस. और ये बंदा नहीं, है बट जो ईटीएच को बार बार बैक कर रहा था कि ईटीएच छूट दे, अरे नहीं, ईटीएच पर छूट दे। ये मैंने कल ही पढ़ा एक्चुअली, तो मैं इसलिए अच्छा, मतलब मैंने भी अब कर जब लिया. न्यूज बाहर आ रही है ये रिसेंट सब न्यूज़ है. बकचोदी की, अब जाके तू फाइनली मान रहा है ऐसा? अभी अभी मैंने लीक्स आज पढ़ा बाहर आ कि रहे ETH हैं। is devastated even though he's receiving 17 million something. I don't know. भाई वो मजे I don't know कर if रहा it's है, उसको कुछ डेविस्टेशन नहीं है. ही भाई ही कल इज वो आएगा हैप्पी वापस। लेफ्ट. कल वो हाँ, अपने अभी बाप वो के तो साथ एक बगीचे में घूम रहा था। अरे वो तो यार रॉयल आदमी है। यार मेरे को खाली ये बोलना है कि it is sad to see that so many coaches who do not have millions to spend on their squads, and they could just come at United or stay away to United and just outplay a manager's tactics like every game out. All right, and this happened over and over again. Obviously you have to back your manager, and we did that for a good 2 seasons. Like okay, first season we did well, very good, whatever. But अबे उसका इतना performance अच्छा नहीं था. We also did not have a lot of points to finish third that time. Like Liverpool were not doing well,
Chelsea were not doing well that season. So that got hid. Second season mein he had a lot of injuries, and the problem with ETH is when he loses by a lot. Like he cannot just shut up shop. Like अगर मैं 2 गोल खाया है, मैं 4-5 गोल खाऊंगा. क्रिस्टल पैलेस के सामने 4 गोल, तो लिवरपूल के सामने 7 गोल, ये सिटी के सामने 6 गोल. And you can't do that. Like this comes back to you. It haunts you. Never mind the fucking goal difference that used to go haywire. And this is Rahul. This is ETH's fault. This is not the player's fault. Okay, के तुम अगर किसी वो बोल रहे हो कि तुम लोग 4 गोल खाया है, तो तुम बोल सकते हो कि भाई बैठ जाओ 6 लोग बॉक्स के अंदर, दूसरी टीम्स कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो? All right, there is no charisma. He just stands on the fucking byline and says nothing. He shows no passion. So this is the manager's fault. Okay. Yeah, I'm not at all backing your manager. I'm not at all backing your manager. तीन नहीं, it looked like you were like कि वेस्ट हैम के सामने ETH की क्या गलती थी. मैंने ये भी बोला था, लाइफ इज अनफेयर. ओके, लाइफ इज अनफेयर. जब तुम अच्छा नहीं कर रहे होते तब तुम्हारी लगती है, बट उसके पहले दिस वाज ऑल बिल्डिंग अप. Alright, but the reason why I said was कि ETH को sack करने के लिए was not the West Ham match. नहीं, I understand. And if it is the West Ham match, then it's completely wrong. Whatever the decision your board has taken is completely wrong. पहले के matches अगर उनको नहीं दिखे, exactly. मैं वही बोलने जा रहा हूँ. It is nothing to do with the West Ham. Rahul, it is क्या होता है कि it is definitely not that match. It's like when you are like very बहुत ही वो है कि when you are in a relationship, तो things keep building up, and then there's always one tipping point आता है. हाँ. Yeah, ठीक है. Then तो West Ham was the tipping point. And then I think अगर West Ham वाला मैच जीत जाते तुम लोग तो probably शायद sack नहीं होता. Probably 1-2 हफ्ते और खींच लेता. I'm saying that. तुम लोग को एक मिनट I think. बट पहली बात तो अभी assume करके क्या ही point है. नहीं. We should clarify this to these assholes, Neil. We don't owe them anything. हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको लगता है कि वेस्ट हैम के बाद we have taken this decision. I am sure टॉटनहम के बाद ही ये लोग ने they must have started looking at other managers for sure. It takes a while to get to this decision. और ऐसा नहीं होता कि एक वीक में डिसीजन लिया और एक. अरे पर मोहित हम भी वही बोल रहे हैं यार. You don't understand the point. What is wrong with this guy? This is what I am telling. You are what first is of wrong all with pay me. attention what we are talking here. First of all, he said कि West Ham वाले मैच में क्या, West Ham match was not at all the problem. ये पहले ही शुरू हो गया होगा. इन लोगों ने शायद अभी जाके डिसीजन लिया होगा, या तो तुम्हारा इनियोस लंदन में जाके 6 घंटे का जो मीटिंग किया है तब उन लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया होगा सारे प्लेयर्स की किसको करना है. उन लोगों ने कांटेक्ट करना भी शुरू कर दिया होगा. कांटेक्ट ऑलरेडी हो गया होगा. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इन्होंने बोला होगा एक मैच और ये हारा और ही इज आउट. Okay, तो technically वही हुआ ना. तो end of the day, that's what I'm saying. The tipping point is the West Ham game, ना फिर technically, idiot. अरे but Varun, what Mohit is trying to say is कि the West Ham game had no connection with Ten Hag getting sacked, because एक बात समझो. यार तुम लोग ये मैच चेल्सी के सामने हार जाते, मैं क्या मना कर रहा हूँ. सटिया गए दोनों के दोनों लिटरली. हाँ, सारी अक्ल तुम लोगों को है. क्या बोल रहे हैं क्या समझना है पता नहीं है. राहुल एंड वरुण, एक बात समझो कि if the manager is getting sacked 24 hours later and within 24 hours Amorim का पूरा वो announcement and everything officially वो सब हो रहा है, तो it's not possible only कि वो 24 hours के अंदर वो सब हो रहा है. They must have had that already 2-3 weeks in place. And West Ham के सामने जब वो डिफीट हुआ तो they were like, okay, this is a good time to announce, because वो West Ham को 5-0 से पेल के जीत जाता और फिर अनाउंस करते कि अब सैक कर रहे, तो उसका क्या पॉइंट बनेगा. मैं क्या बोल रहा हूँ यार. वही बोल रहे हैं. वही बोल रहा हूँ यार. तुम लोग कैसे हो दोनों के दोनों यार. गलत मैच में सैक कर दिया, गलत मैच के बाद सैक कर दिया. पता नहीं क्या. अरे वो टिपिंग पॉइंट था बोल रहा है. वो टिपिंग पॉइंट, दैट वाज point is what they are only talking, I think. Amorim. चलो guys, I think it's better to move on to the next topic. Move on, ज़्यादा भाव मत दो mid tables. Let's talk about the. वो तेरे पास वो वॉल्टर वाइट वाला हैट है क्या, कार्बो हैट पहन के आया. सेम दिख गया एग्जैक्ट. देखो ना, अभी आप वेटिंग फॉर द लिवरपूल मैच. ये लोग भाव नहीं दे रहे ना मिड टेबल सबको. मिड टेबल क्लब ही इनका फर्स्ट जो ये है ना वो निकालेगा इन लोग को. हम लोग फर्स्ट नहीं है, सेकंड में. लिवरपूल ब्राइटन मैच. हम लोग फर्स्ट नहीं है, सेकंड है. खाली बॉटम हाफ मत देख, टॉप हाफ भी देखा कर. हम लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट की तरह पूरा टाइम बॉटम हाफ ही देखता रहेगा.
नॉटिंगहम तो फॉरेस्ट की मतलब तरह नहीं आके है। इनको बस यहाँ पर हराएंगे इन लोग को। Guys, सीजन That's all. के बाद guys, बात करें। we are बकवास just बात है। few subscribers away from 200. Please like, subscribe, and share. Man, you have to share the videos as well. Just don't Yeah. hog the videos, man. I know you guys These love us. intellectual talks that we are Please doing share. that needs to get spread, right? To understand what we are talking. Yeah, so we'll move on to the Brighton and Liverpool match. Yeah, so Mr. Indian, बताइए. Mr. Indian. So we just How was played the against Carabao them. match? Carabao Cup was like a Carabao Cup, kind of like a हमारी B team उतरी थी. I think Diaz Yeah. और गैप को भी था Hmm. जो रेगुलर्स में तुम बोल सकते हैं स्टार्ट किया था. नूनेस आई थिंक. Man, there's not a We move don't have a possession. मेरे striker. पीछे से sunlight बहुत आ रहा है अभी. I think it's going to disturb. Yeah. Yeah, continue. Rahul. So Concha also started. हाँ हमारा third keeper Jaros, he also started. He was good. He was quite good. गैप को भी काफी अच्छा खेला था. पर इन लोगों में भी वेल बैक नहीं था. और who is the other player यार, उनका एक मिडफील्डर है क्या, वो मिटोमा भी नहीं खेला था. मिटोमा नहीं था. मिटोमा तो इंजर्ड है ना आई थिंक. मिटोमा नहीं, जय, वो मिटोमा आर injured से है. आर से कुछ नहीं स्टार्ट नहीं, होता है came यार. on आर ना. से हाँ. He came He's on pretty ना. good. मिटोमा came on. अच्छा मिटोमा आया था क्या. हाँ. कोई तो है यार उनका, एक मिडफील्डर है ब्राइटन का, इज इन प्रीटी गुड एक फॉर्म. एक हार से हाँ ही इज प्रीटी गुड यार, वो अच्छा खेल रही है. मैं भी रूटिगर उसकी या बात रूडी, कर रहा हूँ. नॉट नॉट रूडिगर, रूटिगर है क्या, कुछ ऐसे कुछ नाम है क्या? हाँ एनसीसो. सो नॉट एनसी सर. anyways so we'll be playing against Brighton on Anfield. कोई ये तो इनके कोई हवाई इंजर्ड मैच हुआ है था. क्या? हम लोग में तो कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ है. इंजरी तो सेम है. जोटा विल नॉट स्टार्ट. एलिसन इज नॉट गोना स्टार्ट. किएजा ठीक हो गया था. ट्रेनिंग में आया और ट्रेनिंग में वापस इंजर्ड हो गया. सो इज बैक टू द हॉस्पिटल बेड Nice and one. Successfully replaced Matip. yeah, Wait, I think इंटरेस्टिंग मैच होगा. एनफील्ड है तो थोड़ा सा रटर कॉन्फिडेंट हो कि हम जीत सकते हैं. आई थिंक अब तो जीतना चाहिए. आई डोंट नो अगर थोड़ा अभी तो हम नहीं जॉर्जिनियो जीत कॉन्फिडेंट पाए है, रटर. तो. थोड़ा तो यार हराएंगे यार, ऐसा बोलो. हराना यार, आई डोंट नो. वी हैव जीरो क्रिएटिविटी लिटरली. मिडफील्ड तो अरे पूरा का राहुल, पूरा अभी भी मरा हुआ रटर है. का इज लिस्टेड एज अ स्ट्राइकर. स्ट्राइकर रटर है, जॉर्जिनियो रटर फ्रॉम जोड़स. पर वो हाँ, पीछे नहीं रूटर एज अ रूटर. नंबर 10 नहीं खेलता था वेल नहीं, बैक के पीछे. मेरे को भी वही लगा कि वो मिडफील्ड है, लेकिन उनके साइड पे देखा अच्छा, तो इज लिस्टेड एज अ स्ट्राइकर. That's आई डोंट नो. I मेरे think को भी that's वही their लगा कि बट I इज think प्रीटी वो गुड. उनका क्या बोलते हैं, he is pretty good. He is their record signing. They paid the most amount of money for him. वो लेफ्ट बैक. नहीं नहीं, रूटर. नहीं जॉर्जिनियो उनका रटर एक स्ट्राइकर है. मतलब ये स्ट्राइकर है. मुझे लगा वो मिडफील्डर है फॉरवर्ड. बिकॉज पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा वो नंबर 10 खेलता है. बट अपेरेंटली वो स्ट्राइकर है. उनका जाओ What? पेड्रो भी इंजर्ड है. आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. एंड बट अपने वेलबैक पहले बन गया ना फिर से. हाँ, और वेलबैक पहले वाले फॉर्म में. खेलेगा तो सही. हाँ, दे आर इन नंबर 6 पोजीशन एंड आर्सेनल की भी बजा कर बैठे ये लोग. यूनाइटेड की भी बजा कर बैठे. तुम लोग के सामने भी ड्रॉ हुआ था ना कि ड्रॉ जीते, हुआ तुम था लोग बट जीते रेड थे कार्ड शायद. था ना हम लोग. नहीं नहीं, 4-2 जीते थे ये लोग. चेल्सी अच्छा ने तुम ज्यादा लोग था. 4-2 जीते. अरे हाँ, तुम लोग तो चेल्सी जीता था. कोल यार मोहम्मद ने मारा था. मुझे अभी 60-70 पता होना चला चाहिए था, है. बट मुझे अभी So पता क्या चला बोल कि रहे थे? and हाँ नहीं, Chelsea and Villa have been knocked out. I just came to know. Fuck. क्या? Chelsea, गुड इवनिंग Spurs कभी and this सिटी. Labin. हाँ सिटी, Chelsea, City and Chelsea Villa. and Villa. या ये Fuck. लोग टाटा बाय बाय हो गए. So I don't know. I don't see anything much. कुछ changes कुछ करेगा नहीं है. वो वही टीम उतरेगा. I'm more डू यू worried बिलीव about the राहुल ऐसा होता है कि contract renewal यार. अभी मैं annoyed हो गया. I'm literally annoyed now. I don't know what is happening.
कोई एक तो साइन कर लो, कोई एक भी साइन नहीं कर रहा है। उसको तो बैलन डोर जीतना है, पता नहीं कहाँ जीतने वाला है वो। समझ गया ना, उसको यहाँ नहीं जीतेगा। नवंबर में शायद होगा, नवंबर दिसंबर। दिसंबर, पता नहीं, रूमर्स तो आ रहे हैं दिसंबर तक खींचेंगे ये लोग, ऐसा लग रहा है। बट बट आई थिंक यार तुमको 14 बट मैचेस, तुम लोग अभी साला को Four- बेच भी नहीं सकते ना, तुम्हारे पास यू डोंट हैव एनीथिंग लाइक। बेच तो नहीं सकते, इन तीनों में से किसी को बेच नहीं सकते, ये बस जाएंगे फ्री। But अरे the smart thing उनका to उनका do एज भी क्यों देखो नहीं ना बेच यार, सकते? मतलब आई थिंक वैन डाइक इज नॉट 33 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ 33, Salah was also 30, 31. Only 32 yeah, only youngest star you have is Arnold. आर्नोल्ड। मतलब हाँ 26, 27. बाकी रॉबर्टसन भी आई थिंक 30 है. हाँ 30 है। Uh, कोनाटे थोड़ा पर पता है मेरे यंग को है। क्या लगता है कि कुछ प्लेयर्स का कुछ वैल्यू नहीं होता। लाइक साला को यू जस्ट कीप इट टू योर क्लब, यू डोंट थिंक अबाउट हिज रीसेल वैल्यू। सम उसका एक ऑरा ऐसा है कि यार वो ही कैन जस्ट चेंज द गेम। इवन सेम विद ट्रेंट, इवन वैन डाइक, लाइक दे आर वेरी इंस्पिरेशनल फॉर पीपल हु आर कमिंग थ्रू। सो rather not see the transfer value, keep them। इसके लिए शायद लिवरपूल ने कोई प्लेयर साइन नहीं किया। आर्ने स्लॉट हैज बीन वेरी क्लेवर, ही इज लाइक लेट मी सी, इनका पूरा बनाया बनाया ग्रुप है, व्हाई स्पॉइल एवरीथिंग, लेट जस्ट गो विद द फ्लो, एंड ही यार यहाँ वेंट पर विद द आर्ने फ्लो, स्लॉट इट की हैज गलती वर्कड। नहीं है, यहाँ पर आर्ने स्लॉट की गलती नहीं है, बट द फकिंग management. How can you let them run their contracts down? Like this is the same No, things I that don't United think, clubs like United do. हाँ, that is very, yeah. And when you don't have a backup, it's even worse कि तुम एटलीस्ट राइट बैक का और वीवीडी का कोई बैकअप है वो भी नहीं है, तो मतलब कुछ तो वो But प्लानिंग होना चाहिए ना। बट ये लोग ये भी सोचा होगा कि जैसे नो यहाँ पे सऊदी अरेबिया से कि कतार से ऑफर्स आए होंगे साला के लिए, दे मस्ट हैव रिजेक्टेड इट। दे लाइक वी डोंट वांट टू सेल यू, No, वी they वांट टू both कीप have इट, वी डोंट वांट rejected. टू Like एंटर इन दिस Salah, वन। एक even Salah एक doesn't मिडल want to go. ईस्टर्न एक मिडल ईस्टर्न फैन है, ही लिवरपूल, ही केम एंड सेड दैट कि साला अगर 38 की एज पे भी बोलेगा ना मेरे को अब सऊदी में खेलना है, तो भी वो वहां पे एज अ वो लोग स्टार ले ही लेंगे। प्रोजेक्टेड हो। हाँ वो हाँ, ले एज अ स्टार लेंगे। ही। easily. सो इट डजंट मैटर कि इफ ही गोज नाउ और एट But see, 38। the point And is Salah and he's doesn't quite want fit. to go to Saudi. साला को या नहीं जाना है, वो बहुत क्लियर है, उसने इनडायरेक्टली बहुत बता दिया है कि उसको नहीं जाना है, he wants to stay in Liverpool. Same as with Maybe not VVD. now. 2, 3 years down the line. प्रॉब्ली ऐसा। Maybe depends. Because PL is not See, easy once you're साला, 34, 35 यार. हाँ बट सी साला शायद 35 में खेल लेगा, सऊदी रहेगा कि नहीं मेरे को वो नहीं पता। सिर्फ आई एम वो जेम्स वेरी मिलर क्या स्केप्टिकल। कौन से मांस का खून का बना है पता नहीं. हाँ I think पर it's a strip सऊदी, club, right? हाँ पर James Miller. सऊदी प्रो लीग रहेगा कि नहीं उसका गारंटी नहीं है मेरे पास। चाइना की तरह वो नहीं भी नहीं, अगर वहाँ पे पैदा हो बड़ा रहेगा तो वो है। राजवीर depends तुम on the म्यूट में है viewership बाय द के वे। साथ, they just stick with it. They have the funds to keep on going. Even Chinese league भी अभी funds तो हैं. ऑस्कर अभी भी खेल रहा है apparently वहां पे. One of the few guys still left playing in ऑस्कर Chelsea. अभी भी उधर नो है. बट वो चार्म नहीं रहा China. है, समझ रहा है वो लीग का। But वी देखो मैं बोलूँ डोंट कोई भी Chinese league हियर में प्लेयर्स bro, गेटिंग रूमर्ड Chinese टू और दोस। नहीं, but I'm saying China and Saudi में एक ही फर्क है, is that एक तो चाइना का टाइम जोन, it doesn't suit the European people to watch the matches. Secondly, Saudi being right there ना, तो प्लेयर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है टू गो टू देयर होम्स बैक। यूरोप जाना हो तो जल्दी जा सकते हैं। दे कैन क्या बोलते हैं उसको, दी टाइमिंग्स आर लाइक जस्ट 2-3 hours अवे फ्रॉम लाइक द मेन स्ट्रीम जो मैचेस देख रहे हैं यूरोप में। सो फॉर देम इट्स अ परफेक्ट लीग, बट आई डोंट नो कब तक ये लोग सपोर्ट करेंगे। सो दिस गाइस, हैपेंड विद सऊदी अब गोल्फ। रोनाल्डो। नहीं, So this happened with golf as well, where Saudi money came in. There's something called एक तो PGA tour होता है, which I am sure you guys know, या the या Pro Golfers Association tour. So now there is उनका competitor is Live Golf, LIV. हाँ So they signed a lot of golfers at very exorbitant prices. मतलब उनके तुम बाइंग देखो, I think few players got above 100 million, ऐसा उन लोग को पैसा मिला है to join that Live Golf, और PGA छोड़ के Live Golf के। तो अभी क्या हुआ है, लिव गोल्फ अच्छा था, मैनेजमेंट एवरीथिंग, ऑल द प्लेयर्स एंड इवन द पीपल हु हैव गॉन एंड दोस इवेंट्स, वो बोलते हैं इट इज वेल मैनेज्ड देन द पीजीए टूर। सो बट अभी पर बिकॉज व्यूअरशिप और लाने के लिए दे मेड अ डील विद पीजीए कि वी विल प्ले, सब प्लेयर्स एक साथ खेलेंगे। सो प्रोबब्ली जो अभी हमारे कौन है
ये गधा कौन है अभी चेयरमैन फीफा का? अच्छा हाँ, दिस गाय दैट बॉल्ड हेड। इन्फेंटी हाँ, को और जो शादी में आया था नहीं, अनंत शादी अंबानी। नहीं, या दैट गाय अभी उसने फालतू में मेसी की टीम को वो बेजोस लोकलाइट। हाँ वो कम्युनिटी शील्ड जीतने के लिए उसको वो क्लब वर्ल्ड कप में डाल दिया उसने। ठीक है, ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू ही माइट पुट ये सऊदी के टीम्स को भी डाल देगा उसमें क्लब वर्ल्ड कप में। सो ही इज प्रॉब्ली ब्रो तू क्लब थिंकिंग। वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, 2 साल में पता चला ये सब मेसी रोनाल्डो चैंपियंस लीग में आ गए। हाँ क्वाइट हाँ, हो पॉसिबल सकता कर है। सकते हैं क्वाइट ये लोग कर पॉसिबल है, सकते हैं। बहुत पॉसिबल है वो। बहुत पॉसिबल है, बहुत बहुत ये लोग कर सकते हैं ऐसी हरकतें। सो वही सुपर कप बनाने के चक्कर में उसको कंपटीशन देने के लिए माइट डू ऑल दीस थिंग्स टू गेट मोर व्यूअरशिप एंड मोर मनी। सो या आई एम नॉट सेइंग सऊदी इतना जल्दी जाएगा नहीं, दे विल प्रोबब्ली फाइंड अ नहीं वे। जाएगा। इट्स मोर कन्वीनियंट नो फॉर नहीं, नहीं प्लेयर्स। जाएगा। मैं तो एकदम वो मजाक 7-8 पॉइंट ऑफ व्यू से ही years तो बोल रहा नहीं था। हिलेगा सऊदी। द रीजन व्हाई कतार गॉट द वर्ल्ड कप नॉमिनेशन अहेड ऑफ द इंग्लैंड एंड यूएस वाज दिस होल कनेक्शन टू गेट द मिडिल ईस्ट फुटबॉल, यू नो, अ लिटिल बिट ऑफ या बूस्ट स्टार्ट। अभी केडीबी के भी रूमर्स चल रहे हैं अल नसार के साथ। यू डोंट नो ईडरसन वो के भी भी। सच होने वाले हैं कि नहीं। तो it's not gonna happen soon, but the point is, coming back to Liverpool, see, as far as I am as far as I am concerned, ये तो नहीं जाने वाला है, साला तो नहीं जाना है, मैं उसको नहीं जाना है। अगर लिवरपूल doesn't find a way where you know the he अगर उसको वेजेस ही है, जो भी चाहिए, आई थिंक वेजेस ही होगा। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स शुड बी अ मैटर। या तो नंबर ऑफ इयर्स होगा, ये दोनों जो में अगर इन मांगते लोगों दे ने, दो यार। हाँ, और नंबर ऑफ इयर्स होगा। आई थिंक ये शायद 1.5 साल या 2 साल बोल रहे होगा, ये लोग 1 साल बोल रहे होगे, आई डोंट नो, वॉट एवर इट इज। इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, देन ऑब्वियसली ही विल गो टू सऊदी। ही इज नॉट गोना स्टे इन एनी अदर क्लब। आई थिंक प्रीमियर लीग में तो होगा नहीं। नहीं, और या तो फिर पता नहीं, ये लोग न्यूकैसल के साथ कुछ कनेक्शन करके फिर वो न्यूकैसल में लोन में आ जाए और यहाँ पे खेलेगा, समथिंग लाइक दैट। नहीं, नहीं, पर वो ऐसा नहीं होगा। मेरे को बहुत चांसेस, एग्जैक्टली वो भी चांसेस मेरे को बहुत कम पीएसजी लग हो रहा है। सकता है, पीएसजी या फिर मिडिल ईस्ट। माइट बी, बट उसको है ना वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा जो सऊदी में मिलेगा। दैट आई एम प्रीटी श्योर। वो तो मुस्लिम यार बोल रहा हूँ डोमिनेट ना, कभी कंट्री भी में जाएगा ना, इवन एट द एज ऑफ 38 40 पे भी जाएगा तो भी उसको उतना रिस्पेक्ट he मिलने ही वाला will है। be not equivalent but somewhere around Ronaldo, not या equivalent but उसके थोड़ा मतलब, I think Ronaldo के बाद you can say he can be one of the famous players नहीं नहीं, यू नो व्हाई? over बिकॉज there. सऊदी में उसका फॉलोइंग बहुत ज्यादा है इन द मिडिल ईस्ट। उसका बहुत ज्यादा फॉलोइंग है साला का। हाँ, he So he's probably, himself is a Muslim ना, तो फिर होगा ही। oh, I don't think that matters, but Salah, because being an Egyptian or plus he's a star player, man, so obviously that matters more to them. हाँ but राहुल, व्हाट डू So यू थिंक? डू yeah, यू हैव लाइक 2 back-to-back मैचेस अगर होते हैं कोई सेम टीम के सामने, so it's always like you win one, you lose one, उसके चांसेस yeah, बहुत है। I was That gonna is the come to that reason. only. Yeah, yeah, So I think Brighton will, trouble you. I saw the Liverpool Brighton match, Carabao Cup में, because it हाँ started like 45 minutes earlier. So I had nothing to do. I was मैं watching हाफ the टाइम match तक and I देखा, think फिर वही मैच का हाईलाइट चल रहा था, पता नहीं क्यों, फिर पता चला मैं सो गया था, मैं कोई नहीं हमारे साथ वही पता। हुआ ना, न्यूकासल चेल्सी वाज अ बैक टू बैक। हाँ न्यूकासल चेल्सी वाज अ बैक टू हाँ, बैक न्यूकासल फिक्चर चेल्सी। मतलब पीएल में। what was the score for both matches? चेल्सी 2-1 won we the won, Premier League, I think 2-1। 2-1 yeah, and Okay, they and बिकॉज lost and to today we the. lost है। अवे they सेंट lost. जेम्स पार्क था Today we अभी, lost। हाँ, फिर देन दे लॉस्ट। Yeah. So मेरे को ये लग रहा है कि ये वाला मैच थोड़ा लिवरपूल के लिए डाइसी होगा। I am sure थोड़ा of it. डाइसी, एग्जैक्टली, दिस थोड़ा इज व्हाट आई डाइसी वाज, होगा। थोड़ा नहीं बहुत It won't डाइसी be होगा as देख राज। easy. हाँ बहुत होगा, बिकॉज मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है। इफ आई हैव टू से, तुम लोग बोलते चेस दिखाओ चेस दिखाओ, मैं क्या क्या चीज में चेस दिखाओ? अब तो तुम लोगों ने भी तूने देख एक लिया मैच में लिवरपूल नहीं को। दिखाया, तूने एक मैच में नहीं दिखाया। एग्जैक्टली, अब तो तुमने भी देख लिया ना हम कैसे खेलते हैं। अरे अब बट तो मैं राहुल, एक अब मिनट, तो एक मैं मिनट, ये भी कितने नहीं बोल मैचेस? सकता कि तुम लोग नहीं देखते, अभी तो तुमने भी खुद ने देख लिया है सुन कि सुन मेरी व्हाट बात, वी डू। सुन मेरी बात। तू कितने मैचेस हुए अभी तक प्रीमियर लीग में? 9 मैच हुए हैं। 9 मैच हो 9 गए, में बस से 2 मैच अभी। टोटल चुप टोटल चुप हम चुप लोग रहे। 14 मैचेस, अबे बोल, तेरा ही रिकॉर्ड, तेरे को ही हेल्प कर रहा हूँ। 14 नहीं, मैचेस वी हैव प्लेड, वी हैव मेरे ड्रॉन को वन एंड लॉस्ट वन। मेरे को क्या क्या नहीं सुनना तेरे से इस, मेरे को खाली जो आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वही आंसर देना मेरे को, और लंबे लंबे आंसर मत देना। ओके, प्रीमियर लीग की बात करते हैं। 9 मैचेस हुए, दिस इज गेम वीक 10।
तो 9 मैचेस में से जो 1-7, ड्रॉ 1 एंड लॉस्ट 1, करेक्ट? ओके, तो मुझे बता, व्हाई आर यू नॉट कॉन्फिडेंट? मतलब क्या है, कोई तेरे पीछे बैठा है ये, मतलब ये सब बाबा यागा हु सेइंग कि नहीं तुम लोग अभी हारने ही वाले हो? ठीक है, तुम्हारा मैच छोड़ के वी हाँ। हैव 2 अदर मेंबर्स हियर जिनके सामने खेल चुके हैं, एक है राज और एक मयूर। ठीक है, राज एकदम ऑनेस्टली बोलना, मेरे को पता है वरुण का आंसर क्या होगा, तो इसलिए मैं वरुण से नहीं पूछ रहा। राज, तू ऑनेस्टली बोलना, तुझे लगता है लिवरपूल प्लेड बेटर देन आर्सेनल? या मेरे को लगा कि यू गाइस डिडंट कनेक्ट नहीं नहीं, खाली नाइसली से एज यस और नो, लिवरपूल नहीं आई अच्छा डोंट थिंक ठीक है। नो मयूर, तेरे को लगता है लिवरपूल बहुत अच्छा खेला चेल्सी के नहीं, सामने कंपेयर? ऑनेस्टली नहीं। तू देख रहा है मोहित, this is the problem. We are just scrapping results, if I have to be very honest with you. The the control football बोलो या तो total football, वो है ही नहीं। ये बस निकल रहा है, लिटरली हम लोग बस निकल रहे। इट्स अ ड्रीम स्टार्ट, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, एनी मैनेजर कैन ड्रीम ऑफ। और अगर तुमको लग रहा है कि अगर ऐसे कर करके तुम जीत जाओगे, देन यू आर रॉन्ग। ऐसे नहीं होता है। You need to show So whether dominance in you guys have पता only been lucky for the 7 matches that पता you है won. not मेरे लिए तुम्हारा ये not a मंथ बहुत matches. क्रूशियल है। I हाँ, think November and December. If you guys dodge these next 10 games, or if you get like around, let's say, uh, I don't know, around 25 points from the next 10 games, I seriously think you can win the Premier League. बट इसमें यही है ना कि अभी देख, अभी आई एम जस्ट लुकिंग एट द फिक्सचर्स, जैसे तूने अभी बोला वी प्ले ब्राइटन, क्या हो गया इसको, हाँ वी प्ले ब्राइटन, Yeah. उसके बाद वी गो एंड मीट जावी अलोंसो Then it एनफील्ड में, starts. देन एस्टन विला एट होम, फिर साउथहैम्पटन अवे, देन मैड्रिड, देन मैनचेस्टर सिटी, देन न्यूकैसल। तुम्हारे ये उसके नवंबर में बाद मैचेस है क्या, सिटी और ये वाले मैचेस? But I think by the Newcastle game, it should be clear. नहीं, मेरा क्वेश्चन ये आई है थिंक बाय मैन सिटी कि मैच वी शुड बी क्लियर। तो मैन सिटी का मैच नवंबर है कि दिसंबर है? आई थिंक दिसंबर दिसंबर 1 को है। ओके, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद ही है मतलब। इंटरनेशनल ब्रेक के बाद है, लेकिन उसके ठीक पहले रियल मैड्रिड है। आई थिंक वी शुड, आई मीन अगर देख बायर्न लेवरकुसेन के सामने अगर जीत गए लिवरपूल, तो वी कैन कम अप विद अ बी टीम आल्सो। आई डोंट नो, अभी तो ऐसा सिचुएशन है कि आई They डोंट won't नो, do मैड्रिड that के सामने against बी Madrid. टीम करो, हाँ, बट दे विल नॉट डू दैट एग्जैक्टली। पता नहीं अंदर से खून खोलेगा कि नहीं, बट आर्नेस्लॉट थोड़ा स्मार्ट है यार, वो स्टूपिड नहीं है क्लॉप की तरह, इमोशन ज्यादा नहीं लाता है। मेरे को लगता है वो थोड़ा स्मार्ट है। बट यार यही है, सी दिस इज द प्रॉब्लम, हमारा Do you like मिडफील्ड। that? Do you like that though? Like let's go to a little off topic because this is getting very boring, man. So हम लोग ये बोल रहे हैं कि do you think Arne Slot, do you enjoy him not being that passionate? Because everyone loved Klopp because of the passion that he brought. आई एक्चुअली, मेरे को मैं बोलूं, आई थिंक आई मे साउंड अ लिटिल बिट absurd, या तो शो ऑफ लगेगा कुछ लोगों को, पर मैं सच में, मेरे को आर्ने स्लॉट बहुत पसंद आ रहा है अभी तक, वो जो कर रहे हैं ना, बिकॉज ही स्मार्ट, ही इज नॉट, वो दिल से नहीं सोच रहा है वो दिमाग से सोच रहा है। पर और ये राहुल, टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया ऐसा मैनेजर आके लिवरपूल में। ये तुम्हें इसके लिए स्मार्ट लग रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग द पॉइंट्स, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। उसको 2 3 4 मैच हारेगा ना, फिर यू विल सी हाउ ही विल तो चेंज, वही हाउ तो विल है रिएक्ट। राजवीर, वही तो लग जब रहा है, हर मैच ऐसे ही तो लगता है हम हारेंगे। हाँ, तुझे क्या मैं लगता देख है मैं जब देख मैं होगा एक्चुअली, why जब am I तुम्हारे not showing रेफरी chest? डिसीजन, Now you know why am I not showing chest? when you get a red card which you think you didn't deserve to get, या you will get Van Dijk को injury हो गई for let's say 2 3 months, Exactly. then is when you start to realize how good a manager he is. See, even without that, I know he's a good manager. I won't say he's a great manager compared to Klopp. He is a good manager. He knows his stuff in and out. He knows how to get the team handled. The only thing is that we are not able to see a dominant Liverpool नहीं दिख रहा है अभी तक। Controlled football बोलो, total football बोलो, वो नहीं दिख रहा है। Free flow जो we
are used to watching, वो भी नहीं दिख फ्री रहा. फ्लो तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट आई Free flow सॉ द बिल्कुल नहीं चेल्सी है. गेम रेटेड स्टार्ट. Defense is very good. अगर किसी ने प्रेस किया तो आई थिंक प्लेयर्स पैनिक अ बिट, बट आई थिंक वही जो तुम्हारे जो स्टार्स प्लेयर्स लाइक साला एंड वही चला और रहे हैं. हमारा एडवांटेज एक क्या है कि डिफेंस हैज बीन वेरी गुड. जो लास्ट सीजन नहीं था, ये सीजन हमारा डिफेंस all of a sudden has turned out to be Liverpool very are good. a little weak on the left back position. Like I think A little, agar, हाँ, Robertson is not the same old Robertson, and Simicas. I don't know if the any manager trusts Simicas yet. I don't know why. I think he's a good player. Pace है बंदे में, he can create also. But I don't I know think why वो आएगा, people अभी don't धीरे trust him. धीरे आएगा. I think धीरे धीरे सिमिकास आएगा, मेरे को लग रहा है. But I think मेरे को पता है क्या लग रहा है. I think the winter window is going to be big for Liverpool. देख लिया क्या weaknesses है, देख लिया कहाँ fill करना है, and I think this first time मेरे को लगता है कोई club अगर winter में जाएगा strongly, that'll be Liverpool. वो बोलेगा कि मेरे को ये players चाहिए, because तुमने कुछ नहीं करके दिया. और जो Chiesa भी लेके आए हैं ये लोग, वो भी भाई मतलब वो हॉस्पिटल तो बेड पे अवेलेबल था, ज्यादा है. सस्ता अवेलेबल था. और This is why nobody went for भाई Chiesa, अभी man, because he's too लिवरपूल के लिए injury. जनवरी में सबसे बड़ा इशू होगा अगर इन तीनों ने साइन नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो दीस थ्री विल स्टार्ट टॉकिंग टू अदर टीम्स. दैट विल बी अ बिगर. और किसी अरे ने सही जैन बोला. में यूजुअली अच्छे प्लेयर्स अवेलेबल भी नहीं होते. इफ यू गो टू द नहीं मार्केट मयूर लुक एट होते हैं मयूर but दीस थ्री मयूर प्लेयर्स, एक चीज है. साला, वैन डाइक एंड ट्रेंट, they भाई will go in the इनको last छोड़ 6 दे साइड months. में, और अगर अरे इनको मोहित छोड़ दे खत्म साइड में. करने इट्स दे मेरे ओके. को उसके. let me finish. ठीक है, तो इमेजिन एनी वन ऑफ देम, लेट्स से कि साला बोलता है नहीं मैं रुक रहा हूँ, वर्जिल बोलता है मैं रुक रहा हूँ, और ट्रेंट सडनली ही साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट विद रियल मैड्रिड, ठीक है, इन जनवरी. The entire team will be like ये तो जा रहा है ये वो, and then Liverpool will be forced to sign a right back. ठीक है, वो उनपे पूरा का पूरा एक फोर्स हो जाएगा कि भाई अब ये जा रहा है करने के लिए. तो उनके जो प्लान्स होंगे टू गो इन द क्या बोलते हैं उसको, द डीप एंड ऑफ द सीजन, लाइक जाना है उसके लिए बंदे, फिर दे विल बी रशिंग टू साइन अ राइट बैक. और मयूर एब्सोल्युटली राइट, देयर आर नॉट मेनी गुड प्लेयर्स अवेलेबल इन जनवरी टू साइन. तो प्रॉब्ली जैसे केजा को इनको साइन करना पड़ा, प्रॉब्ली दे विल बी गोइंग फॉर समवन जस्ट अ स्टॉप गैप कि ठीक है ट्रेंट का तेरा. फिर ट्रेंट का खुद का ही देखो पिच पे, विल स्लॉट वांट टू प्ले ट्रेंट knowing that he's leaving for Real Madrid in the summer. वो वाला भी 2-3 माइंडसेट आएगा क्वेश्चंस what to मेरे do. पास. 2-3 क्वेश्चन है. एक तो आई फील राहुल, इफ ये तीनों में से तेरे को किसी ऐसा डिसाइड हो गया कि दो प्लेयर जाने वाले हैं तीनों में से, what will be that one player that you would want to extend a contract? Because तीनों important है. Alright, Alisson, by the way, we are not looking at Alisson. Alisson भी I think next year उसका भी खत्म हो रहा है contract. Alright, तो छोड़ देते हैं वो, नेक्स्ट ईयर बात करेंगे. बट लेट्स टॉक अबाउट दीस थ्री प्लेयर्स. इनमें से अगर देखो एक प्लेयर रखना हो तो किसको रखेगा? दैट्स क्वेश्चन नंबर. आर्नोल्ड, ठीक है, बिकॉज़ ही इज द यंगेस्ट, ओके, ऑफ द थ्री. Not even the youngest. It's we don't have a good backup for right back. ओके, so साला का I कौन think है? Rahul, साला trust के me, लिए there's no. दियाज गैप को कीजा कुछ ना कुछ वहां पे चल जाएगा. पर वही तो बात है यार, तुम चला लोगे तो you won't win titles. There is no backup for Van Dijk. There टाइटल is तो no backup for बॉस हम लोग Salah. है ही नहीं. We are not in the title race. Now You the only said title if we race draw, is we are over. title You favorites. only say draw किया तो I'll say we in the title race. तू For the क्यों back next out year कर रहा है? I'm ये saying. For the next year क्या I'm नेक्स्ट saying. ईयर? If we lose ये this. क्या है यार? ये राहुल तो तो है धोनी ना. है भाई. अभी तो है, हम लोग है. It's a three. It's हाँ, a three अभी की this बात thing. कर रहा हूँ ना हाँ, मैं तो. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी के लिए तो है हम लोग. एक और चीज और राहुल ये ने लोग ऐसा बोला जाएंगे था. तो नेक्स्ट सीजन ही जाएंगे. ये सीजन तो खेल के ही जाएंगे. एनीवे, आर्सेनल बॉयज, कीप योर एजेंडा डाउन. एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा था उसको कि मैंने, आई नो दैट राहुल वाज pumped about, not pumped about, but he did say that one of the things about Slot is that he is not known for spending big. The most expensive player that he bought was under 10 million, I think, if I am not wrong. 9 million something. No, but you guys signed a keeper now for 35 million. No. That is also that is not really that the Slot's- money has gone this year. Slot का signing नहीं है. अच्छा, okay. Okay. That was already made a decision before he came in. Like कि तो हम लोग ले ही रहे थे, ये अच्छा कीपर है, he has got good potential, इसलिए साइन किया ना ये लोगों ने. ऐसे ही नहीं होगा. Yeah.
So Yeah. I think what Slot might raid is he might raid Eredivisie because that is one league जो सस्ते प्लेयर मिलेंगे. Will you be happy with that decision? Is my question. Like ETH ने किया, हम लोग ने इतना गाली मारा. अब वो अगर ये उसका कौन सा फेनवर्ड पे जाता है, वो 3-4 प्लेयर उठाता है वहां से. Will you be happy with that decision? हाँ, हमने किया ही है ना. ग्रेवनबर्ग वहीं का है. तो 2 हमने बायर्न से लिया, लेकिन है वहीं का ही. गैप को भी वहीं से आया है. VVD भी मतलब डच ही है. So because we have so many Dutch players in the squad, that's pretty sure he will be looking in that option. So don't you think then तू जो ये मतलब राजवीर और वरुण जो अभी कैमरा बंद करके बैठे हैं, ये लोग जो ये हमारा दिमाग खा गए लास्ट 2 सीजन से कि ETH अपने बस पुराने प्लेयर लेके आता है, और ये बहुत कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि अर्टेटा हेसूस और जिनचेंको के साथ मैनेज किया है. 2 प्लेयर लाया. हाउ मेनी मनी हाँ. उसने कितना स्पेंड किया? ही स्पेंड ओनली 80 मिलियन ऑन हिज एक्स प्लेयर्स. 80 मैं मिलियन. तुम्हारा मैं एंथनी मैं तुम्हारा मैं खाली एंथनी इज वाज 90-100 मिलियन. ठीक है. मैंने क्या बोला था? मेरे को तुम्हारा एजेंडा चलाना ही नहीं है. चुप कर, मैं उसको नहीं, तू पूछता हूँ. एजेंडा की बात ही मत कर. तू ETH को कंपेयर मत कर स्लॉट के साथ, क्योंकि मेरे को पता है स्लॉट मैं ऐसा नहीं ETS के करेगा. बारे में कुछ सुनना ही चाहूंगा. जो जा चुका है उनको नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं. तो जाने दो गाइस, वो अभी भी उसको. जिंदा है, सिर्फ क्लब छोड़ के गए. Bald is dead. Bald is dead. Here is it. Anyway, so चलो मेरा question Rahul के let's लिए. Rahul, would you won't be against that? Bring players from your old team, and if they flop, like I think the only problem with getting players from the Eredivisie is they have to step up really quickly because they are 2 different leagues. Like तुम्हारा गैप को भी तुमने लिया था, उसको भी टाइम लगा था 3-4 महीने to adjust to this league. 3-4 महीने, 1 साल लगा पूरा. 1 साल लगा उसको. 1 साल नहीं, लगा. बट वो अलग पोजीशन भी खेल रहा था. वो लास्ट ईयर पूरा स्ट्राइकर ही खेल रहा था. अभी थोड़ा विंगर खेलना शुरू किया. He's not क्या a गोल striker. मारा है उसने ब्राइटन के सामने. Too good. Both goals were amazing. बुलेट. उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है. Like to take that shot. I think हमेशा second से वाला उसका कॉन्फिडेंस हमेशा से ही हाई था. बट इट इज जस्ट दैट कि उसका फॉर्म थोड़ा सा थोड़ा डाउन था लास्ट सीजन. अभी थोड़ा आई थिंक ही हैज कम अप. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट डियाज. और इसमें फर्क क्या पता है, प्ले मेकिंग उसका बहुत अच्छा है कंपेयर टू डियाज. एंड डियाज का निकलता बहुत जबरदस्त है, जो गैप को नहीं कर पाता. तो दोनों प्लेयर हैज देयर ओन एट्रीब्यूट्स व्हिच दे कैन डू, ओनली दे कैन डू. The others Yeah, can't. my only worry about with Liverpool is that they're as thin as Arsenal. They're like paper right now. Like बिल्कुल भी depth नहीं है squad में. Like I can't believe I'm saying this, but United has more depth. Players might be shipped. हमारे पास डिफेंस में डेप्थ नहीं है. बिल्कुल डेप्थ नहीं है. इनफैक्ट डिफेंस में तो अटैक में है. मिडफील्ड में भी थोड़ा है, हम बोल सकते हैं. अटैक में डेप्थ है. We have a little bit depth in attack, but that is also because when Chiesa came in, उसके कारण और एक और चीज, if these guys decide not to renew their contracts, right, and they say कि हम लोग जा रहे हैं, these guys might not get that much game time because they will be out of the managers plans altogether. तो वो बोलेगा जिसको मेरे को कंटिन्यू करना है उसको ज्यादा गेम टाइम दूंगा. वो केस में क्या करोगे? Like would you not stop playing BVD or Salah if let's say they do not? I don't think they can, man. They don't have the luxury to stop playing them. Exactly. Even though it's 6 months down. मयूर, that was my whole point कि जब अगर ऐसा होता है उस केस में the manager will be put in a position. It depends the situation, how it is happening. See, it all depends upon that. If the club doesn't want to sign them, or if the player doesn't want to sign the contract, the whole this thing changes. उसको खेलने की इच्छा ही नहीं है. जैसे कि अभी सपोज सांचो था या तो ऐसा कोई प्लेयर था, अगर उन लोगों को उनका जैसा सिचुएशन, उनको क्लब के लिए खेलना ही नहीं है तो वो नहीं खेलेंगे. इनको क्लब के लिए खेलना है, बट नथिंग इज कमिंग becomes obvious to the manager also, right, कि वो ट्रेन भी ठीक से करेंगे नहीं. So it becomes an easy choice for them. This gives me all those Jurgen Klopp वाले vibe. वो 6 महीने पहले बोल दिया कि I am leaving now, which could have 2 effects. One was, all the players are charged up and they go on to win the title, but that doesn't work.
सो मेरे को ये I लग don't रहा है think कि that works. दिसंबर जैन तक अगर ऐसा रूमर आ गया कि नो दे आर डेफिनेटली लीविंग और द कॉन्ट्रैक्ट्स आर स्टिल नॉट साइन, तो शायद लिवरपूल का फॉर्म अफेक्ट हो सकता है या उनके And what पर्सनल फॉर्म्स. and with what Rahul just said, that he is not an emotional manager. He is very calculated. Yeah. He might just tell them to fuck off. Like, हो गया तुम्हारा. Yeah, and that can like साला को या वैन डाइक को कुछ भी थोड़ा भी अग्रेसिवली बोल दिया और उसको बिठा दिया 2-3 गेम, तो that won't work in Liverpool's favor. Guys, by the way, तो पूरा product of the week. स्क्वाड डिसरप्ट हो जाएगा. Product of the week, guys. मैं मोहित हर बार तू हर करता है, मत किया कर. We are not gonna prop any brand till they actually sponsor. Please collab with ऑर्डिनल us का or बिस्किट है give क्या, me कौन a- सा है? अबे यार वो नहीं, we are not gonna say the brand. It's a protein bar. Okay, पता नहीं कौन सी ब्रांड का है. मैं बोलूंगा. I'm muting, I'm kicking Mohit out. I'm kicking Mohit out. The whole truth. Please collab with us or give me a discount on my next purchase. So let's do the They're very prediction. expensive. Yeah, let's start with the prediction, man. 2-0. 2-0 to Liverpool. Yeah. Mohit. 3-2 Liverpool. पहले गोल मारेगा. Okay. Neil. 2-1 Liverpool. Rajveer. 2-2 draw. Mayur. 2-1 to Liverpool. Close game. Yeah. I don't think Liverpool's gonna lose at Anfield again. It's just 2-0 to Liverpool. हो गया यार, जो उनका वो झटका आना था आ गया. I don't think अभी वापस होगा. By the way, guys, there's a situation developing in Milan. Rafael Leao, pretty awesome player. Yeah. सब चल रहा है. I know. He might be available next year. मयूर के शक्ल पे देखा, स्माइल देख रहे, हम ही साइन करने वाले हैं. राफेल लियो से ज्यादा कोनाटे ने गोल मारा है सैन सिरो में ये सीजन. नहीं, वही कुछ तो हो रहा है इधर. आई थिंक द मैनेजर से चल रहा है. बट अच्छा प्लेयर है यार, मतलब आई डोंट थिंक चेल्सी को क्यों ले यार, विंगर है वो. He is amazing. Rafael Leo लेफ्ट पे क्या खेलता है, you can't take the ball off him. He is an amazing player. यार मैं तो बोलता हूँ मार्टिनेली को बेच दो, उसको ले लो यार. हाँ, I'm in for that. Guys, तुम लोग औकात में रह के बात क्या करो. तुम लोग नहीं ले सकते. मोहित, हम लोग के औकात लोग राइस के टाइम पे भी बोलते थे, हमने 100 मिलियन खर्च करके दिखा दिया, इसलिए चुप. सिटी को बीट करके 2 सीजन में एक बार कर सकते हैं, इतना तो है. बात तो तेरी सही है. I don't know. I don't think Arsenal have लियो की जरूरत नहीं है बाय द वे. तुम लोग ले सकते हो, but you guys don't need लेफ्ट पे अभी भी हम लोग बहुत वीक है. We need someone on the left side. बट तुम लोग का स्ट्राइकिंग मेरे को लग रहा है you need a striker. Need a Havertz striker. को rely मेरे को करना Gyökeres है. चाहिए. Havertz I को want rely Gyökeres. करना is too. लिवरपूल वाले मैच में मैं इतना Gyökeres का भी डिफिकल्ट है यार, like with Amorim coming to United. Gyökeres. No, we don't want Gyökeres. I don't want to splash वो money नहीं on- आएगा. He also doesn't want you. हाँ, because Arsenal के साथ लिंक हुआ था ना. I think the bigger part, other than Gyökeres and everyone who are playing in Sporting, is कि Portugal is like the next big talent factory in Europe. So I think Amorim will have a lot of links from the Portuguese league and might help bring players from that. Like a lot of new young talents are coming from that I'm country. excited about Ugarte. एक change that this guy made was Ugarte, bring in Ugarte, and I've been saying that Banter Casemiro cannot do whatever the fuck you are asking him to. He cannot run around the field. उसने You guys Eriksen को बिठा are दिया. forgetting about Bruno Fernandes. Exactly. I was going to come to that. मयूर इनकी बात मत करे. These guys have no right to talk about Bruno Fernandes. ठीक है, जितना उसको गालियां दिया है ना ये सीजन इन दोनों ने, दिमाग खराब कर दिया. जबकि मैं और राजवीर बोल रहे थे, like me, Rajveer, Rahul have been saying that we will take Bruno in a heartbeat. अब इतने खराब फॉर्म में. Awesome player यार. But हम गाली क्यों नहीं देंगे भाई? मतलब if your player is sucking at whatever, तो फिर गाली But like, देंगे why ना? don't you think it's not him? I think he'll flourish under Amorim. It can be the tactics. मयूर, खाली मैं एक चीज बोलूंगा. सांचो क्यों नहीं खेल रहा 2 गेम से? He's ill. Ill है वो, ill. He is mentally ill. नहीं आया ना उसका स्टेटमेंट आया ना. मैं बोल रहा हूँ खाली कि अगर तुम्हारा प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है, उसको बिठाना जरूरी है.
problem is ETH is so stubborn. His thing is he has favoritism. All right, I will play this player back into form. This does not always work, especially with a player like Bruno Fernandes who has been playing non-stop for 3 fucking years. भाई वो अभी 2020 में आया है और उसने ऑलरेडी शॉ जितने मैचेस खेल लिए हैं. शॉ 10 साल पहले आया था भैंचो. I don't know if this is Shaw's fault or this is Bruno Fernandes' fault. शॉस फॉल्ट है, आधा टाइम तो इंजर्ड रहता है यार लुक शॉ. पता है सरकाज़म समझो वरुण, हर चीज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं है. I'm not asking for a fucking reply here. All right. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि he needs a break. और अगर अच्छा नहीं खेल रहा तो बिठा दो उसको. और हम लोग बोल रहे हैं ब्रूनो क्या करता है, if he is failing he tries to do too much. All right. और उसमें उसकी और गांड लगती है. All right. तो if he's not playing well, we have to call it out. And we're calling it out for him to be sat down for a couple of games. इस पे गाली पड़ रही थी उसको. Bruno Fernandes मतलब ये था Amorim coming from the Portuguese league and having those Portuguese links. Bruno might flourish under him is what I'm trying to say. अरे Bruno has played under him. He has already. हाँ. Lisbon. Then तो यार then Bruno Dalo, Portuguese again, Portuguese connection. Ugarte has played under him. All right. He is also fluent in Portuguese because he's Portuguese. So ये तेरा Garnacho will prosper. Alright, so things like these will definitely happen. But you just said, मतलब हमको बोलने की जरूरत नहीं है. Bruno Fernandes is an amazing player. हमको पता है. उसको बोलने की जरूरत नहीं है. जैसे राहुल को साला. Guys, like and subscribe. We're not going to listen to Happy Mo. Mohit, I think the only the trouble that I'm having understanding is कि जो हमारा डिफेंस में स्क्वाड डेप्थ है, what are we going to do about that? Because हमारे पास 5 सेंटर बैक है and 4 full backs है, and this guy plays with 3 at the back, and it's not necessary that जो midfield में 4 है, those are like full backs या मतलब they can be center mids 8 number 6 वैसा सब. So फिर तो मतलब what are we going to do with so many players? No, so Guys, we already discussed United a lot. ठीक है? Fuck off, Let us move we'll to discuss the- whatever you want. we will. You guys can have your own क्या बोलते हैं उसको time. ठीक है? You guys can do whatever you want to. We'll move on to the next. Let's discuss Arsenal's match for like 2 minutes और उसके बाद वापस डिस्कस करते हैं ये चीज भी. आर्सेनल का क्या किसके सामने मैच है? Newcastle. Okay. Away. Newcastle away है. मैं एक्चुअली पूरी बात सुन रहा था and I want to come to that Bruno Fernandes topic. I want to बोल दे understand पहले खत्म कर दे. Let us just move on from where will Bruno he Fernandes. play. तुम लोग सोच के रखो where will he play in his On the right. On the right. on the extreme right. No, so it's देखो FIFA में वो पता है. No, we'll come back. formation We'll come back. Let's ठीक है. discuss Newcastle or this. इससे ठीक जल्दी है. वो कर दिया है. Newcastle is in tremendous form, guys. से चेल्सी को कराबाओ कप में हराया है. Not an easy thing. Yep. Chelsea को मतलब हराना is not an easy thing. It's not Like you an easy can thing. see their record. मतलब they haven't lost too many matches. Rajvi, you're mute पे तू. I'm saying Saint James Park. Newcastle. They have पूरा great white record चलता है. against London teams. And राजीव हम लोग कब से नहीं वहाँ पे बहुत टाइम से वे जीते नहीं हम लोग सेंट जेम्स पार्क पे. नहीं 2 साल पहले 1-0 जीते थे बट लास्ट 2 टाइम से हारे हैं. Yeah. So and plus मतलब राजवीर I की शक्ल think में मेरे को दिख रहा है. मैच एनालिसिस उसके बाद न्यूकासल फॉर्म नहीं. में है. न्यूकासल ये है. न्यूकासल इतने गोल मार रहा है. उसके पता है बाद मेरा 3-1 टू आर्सेनल. मेरा सिर्फ एक ही वरी है दैट इज द रेफ्स. लास्ट वी वर रॉब्ड. अरे यार वो बॉल बाहर के लाइन के बाहर गया था. जेसूस हैड वो कौन है वो जोलिंगटन हैड 2 hands both on Gabriel's back. पर उसके ऊपर चढ़ के मार रहा है राजवीर foul. मैं फिर तेरे को बोल रहा हूँ. मैं तेरे को ही बोला था and I said in the arts like if you even if you go there we were not that match attacking हमारा बहुत घटिया था. ठीक है. We were not gonna score in that match. ठीक है. So Even Newcastle were very bad. They Like, couldn't I score. agree. I am not saying even Newcastle was good. I'm saying वो मैच 0-0 की तरफ ही जा रहा था. ठीक है. That match was gonna be a draw. तो even if we would have got that draw, हमारा 1 point मिलता हमको. That सब लोगों ने everyone took out that match as where we got fucked in the league. No, we got fucked in the league Fulham के सामने twice
and we got fucked against West Ham and Aston Villa. Those were the matches where we actually lost the league, not against Newcastle, where we dropped 2 points. क्या बोलते हैं? We dropped 1 point, I would say, because we were not winning Yeah. that match, no matter what we do. So that was the match where I think ref ने definitely screwed us over. But overall में अगर season में देखूंगा ना, उसमें it did not have any adverse effect on our season, that match. Adverse effect Fulham वाले game में हुआ था, where we dropped 2 points when we were winning against a attacking Fulham. We would have I won the think league. before we start the podcast only, na, we should have like a 10-minute section for Arsenal के ये वाले मैच में लास्ट ईयर हमको रेफरी ने कहाँ स्क्रू किया था, ताकि ये वाला टॉपिक यहाँ हाँ, निकले ना. रेफरी हाँ. सेक्शन. अच्छा रेफरी the सेक्शन. referee So anyways, नहीं, guys, That's it. हम लोग Neil को भी has to स्क्रू leave. किया है राजीव. So एक minute, Neil has to leave. So thank you, Neil, for joining in. Thank God. See you हम लोग guys. keep See you, on man. Bye getting bye. Bye. Happy Diwali. Yeah. So Mohit, continue with the refs, banter, renting, जो भी तेरे को करनी है. हाँ, तूने वो वाला सुना है, वो रॉकी वाला स्पीच? इट्स डजंट मैटर हाउ डू यू डू, अभी के इट डजं't matter how How hard you how hit, hard how you hit, hard it's yeah. how hard you get hit and get back and keep coming back. All right, Yep, ठीक है यार, ये रेफरी वाली बुलशिट हमारे साथ भी हुई है. हमारा तो मैनेजर सैक हुआ है रेफरी वाली बुलशिट में. तो मैं कह रहा हूँ कि लेट्स नॉट गेट इनटू दैट राजवीर. मतलब ठीक है, होता है तुम्हारे साथ खराब, मैं नहीं बोल रहा नहीं होता है, बट उससे सबके साथ बियॉन्ड होता है भी यार. जरूरी है ना. हाँ, सबके साथ होता है, सबके ये होता है. सबके साथ होता है. नहीं, यहाँ पर this तो is जैसे एक्सेप्ट फॉर सिटी सब लोग बोल सकते हैं कि सबके साथ खराब हुआ है रेफरीज के साथ. नहीं, राजवीर, I'll be honest, why I get like जब भी refs की बात आती है is that के आर्सेनल ये मेंटालिटी जो हो रही है ना कि हम लोग के अगेंस्ट सब है, यूज दैट ना यार. हम लोग के अगेंस्ट हम फिर भी जीतेंगे. यूज दैट मेंटालिटी. एंड आई एम नॉट किडिंग. सर एलेक्स फर्गसन ने ये मेंटालिटी से 13 टाइटल जीत लिए, क्योंकि एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल क्लब, ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को भी पूछ लूंगा ना, एवरी सिंगल क्लब हेटेड यूनाइटेड एंड इट्स फैंस when SAF was around. ऐसा नहीं था कोई आके बोल सकता है कि भाई we liked United कैसा खेलती. No one liked the way United played, ठीक है, but everyone was like इनको हराओ, and SAF ने उसको पूरा वो किया था, एकदम फोर्ट्रेस बना दिया था कि नहीं, we are So against he everyone used that. against. I'm saying, Varun. So We don't Arteta, use it क्या यार. तू see, फैंस की Arteta मेंटालिटी भी देख. वही बोल रहा है. Arteta भी वही बोल रहा है. But see, fans are fans eventually. हम मुझे बुरा लगता है जब रेफ हमारा we are robbed of नहीं things. नहीं, I don't like it. I So I don't. If yeah. I'm on the pitch, of course I'll take this कि भाई मैं नहीं distract होऊंगा. I'm a player, but I'm a fan. So I don't like it when referees make a bad call, or when referees are same ही चीज वही दूसरी मैच में होती है and they are not consistent with Arsenal. That is my problem. I'm not giving this as an excuse to not win the anything. But my point is हमको ये थोड़ा ले जाना पड़ेगा एक level पे so that the refs hear these things. This has to be fans. It's not कि एक दो जगह पे हुआ. It is being repeatedly happening. That is my नहीं, problem. but Rajveer, तू अगर let's look at all the 3 red cards, okay? Yeah. First red card राइस का, ठीक है, by वो the तो book. हार्वर्ड वेट खुद ही बोल दिया कि गलती थी हमारी. We should have just given him a warning. हाँ, मतलब but I'm saying in that period moment में, ठीक है, that by the book technically उसको येलो मिलना चाहिए था because he touched the ball. Refs made a mistake because the ball was moving and everything, ठीक है, but No, I'm the saying ball hit Rice. अब तू समझ. By the book, the letter says that if the ball, you're not watching the ball comes and hits you, तुम्हारे पैर में कैसे छुआ तुम्हारे बॉल? Because that player kicked it to Rice. अगर Rice को बॉल नहीं छूता, he was walking back. So he would have वो चल के जाके बॉल नहीं हिट करा है. How would we have explained this thing? but I am That saying Rice कि जब उल्टा उसको उनके चल उसको रहा है. ball hit हुआ, instead of just he literally We can't hear you, Varun. We can't hear you. can you hear me now? Hello. Yeah, now Hello. we can hear you. Yes. Yeah, so I'm saying कि if you look at that moment, you are right. राइस को बॉल हिट हुआ, ठीक है, that was not the point time when उसको येलो कार्ड मिलना चाहिए था. The time when he got the yellow was when he looked at the ball and he poked it outside the play. ठीक है, that's why he got that yellow card. So my point being कि by the book अगर देखें हम लोग तो probably उस टाइम पे whatever decisions, then they realize कि यार नहीं देना चाहिए था when they looked in slow motion or whatever, ठीक है. Then second red का yellow card was Trossard वाला, where he तू ट्रोसार्ड वाला अगर येलो कार्ड देखेगा ना, मेरे को तो फर्स्ट येलो कार्ड से ही उस पे गुस्सा आ रहा था, वे ट्रोसार्ड गॉट, सॉरी,
नहीं नहीं नहीं. Yeah, I don't Trossard remember. का first was a bad yellow card, correct. Bad yellow card Even exactly, and Rice then वाला second 50-50 था. Hmm. एग्जैक्टली वो भी हाफ वे लाइन पे था. देयर वाज हाफ वे लाइन भी, या तो उनके बॉक्स उनके साइड पे था, एंड वी शुडंट हैव डन दैट. ठीक है. Yeah. सो आवर प्लेयर्स वर ऑलरेडी ऑन येलोज एंड दे आर डूइंग दिस, एंड ट्रोसार्ड को पता है क्या हो चुका है. व्हाई एंड ही व्हेन ही वेंट फॉर दैट बॉल जो उसने शोल्डर बम्प करके बॉल लिया था, like those like a player, ठीक है, in that flow and moment he was thinking of passing to Martinelli or whatever, but that was a 50-50 where he would have known कि शायद फाउल हो सकता है. ठीक है. where he उसने बम्प किया है, बहुत गंदा बम्प था, मेरे को तो वो फाउल लग ही रहा था, ऐसा नहीं था नहीं था. बट एंड देन सेकेंडली थर्ड सलीबा का तो वी न्यू कि that is a bad mistake done by Saliba. So we are also putting ourselves in those positions where referees are getting those chances कि भाई इन लोग को कुछ, इन लोग के अगेंस्ट कुछ बकचोदी करो. जैसे लिवरपूल वाले गेम में मैंने बहुत बैंटर किया राहुल के साथ. आई हर्ड द विसल द मोमेंट, क्या बोलते हैं उसको, कीवियोर ने जो हेडर मारा था ना, मेरे को लगा हाँ, तभी प्ले रुक हाँ, गया है, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग. हाँ. मेरे को तो था कि शायद डिड आई हियर अ विसल, मैंने उस टाइम मोमेंट पे लगा आई हर्ड अ विसल बट प्रोबेबली. वहां पे वो टाइम पे विसल बजा ही नहीं था वरुण. I don't know. I I When I kick thought the play had I thought the play had stopped. It फिर जब गोल no. हुआ तो I had celebrated if you remember because I thought कि okay नहीं Yeah. whistle बजा, it was my mistake. But it looked like कि those are the sort of challenges जहाँ referee usually दे देते कि जितना लंबा jump करके when you go over someone's head, usually the refs give it as a foul. So I'm not saying कि yeah, when you look at all these ऊपर से देख रहा हूँ तो we have given them the refs fuck us over. अगर हम लोग थोड़ा लास्ट सीजन देखेगा ना, वी डिड नॉट हैव अ रेड, वी डिड नॉट गिव द रेफ्स टू फक अस ओवर अस, एक्सेप्ट फॉर दैट न्यूकैसल वाला जो था. डू यू रिमेंबर अस बीइंग दिस इनडिसिप्लिन? No, हम we लोग didn't बहुत get any red इनडिसिप्लिन. card last year. Last year एक भी red या card नहीं एक्सेप्ट मिला अपने को. फैबियो द विएरा का डिसिप्लिन इन था दिस. एक शायद, that was it. वो आई थिंक प्रोबब्ली नॉट इन द प्रीमियर लीग, ऐसा फीलिंग आ रहा है मेरे को. Not, yeah, maybe, yes. या But see, सो मेरा point आई ये डोंट. है कि this has to be, of course, Arteta will look at these situations that don't allow the refs, to make a call or make a एग्जैक्टली decision. एग्जैक्टली. या तुम या अपने एंड से ही इतना, but when you play the game, bro, it is very difficult for you to jump out of a 50-50 or not like Saliba का वो tactical foul था, he thought Ben White होगा साथ में, चलो वो खींच लिया. ट्रॉसार्ड और राइस का तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि why that's considered वो बहुत स्ट्रिक्ट था, और वो तभी वो पहले दो रेड कार्ड ही थे जो किकिंग द बॉल अवे के लिए मिले थे हमको. लाइक पूरी या प्रीमियर लीग के लिए भी नया नया था कि दे आर वेरी हाँ स्ट्रिक्ट विद बट दीस रूल्स. सो आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि चलो this year they're going to be consistent and they're going to give these yellow cards. The या problem I have is when the same incidents happened with different teams, they are giving justification कि वो लोग हार रहे थे तो वो लोग बॉल नहीं किक करेंगे. अरे विसल के 2 सेकंड बाद किक किया है. हमारे ट्रॉसार्ड किक द बॉल अवे आफ्टर 0.5 seconds. So how does it matter the context? You are not obeying the rules which has to be applied irrespective of what the scoreline is right now. सो मुझे वो प्रॉब्लम है. दूसरा कि रेफ्स का प्रॉब्लम पता है क्या है कि ये तो व्हाट यू सेइंग इज द बिग वंस, छोटे छोटे फाउल्स जो साका पे होते हैं विच आर नॉट गिवन येलो कार्ड्स व्हेन प्लेयर्स मेक 2 हाँ, 3 like 4 like फाउल्स. even against Liverpool, Luis Diaz had like 7 fouls, उसको एक भी येलो नहीं दिया. एक भी येलो नहीं दिया. वैन डाइक ने इतने बार हावेट्स को किक दिया, येलो कार्ड भी नहीं दिया. इट वाज जस्ट गिवन नहीं अ दिया. फाउल. फॉर मी इफ यू डेलिबरेटली किक अ प्लेयर दैट हैज टू बी अ येलो कार्ड. मैं रेड नहीं बोल रहा बट येलो कार्ड होता हाँ, ही वो. दोनों को येलो मिलना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एग्री. दोनों को मिलना चाहिए. हाँ, हावेट्स ने किक नहीं किया था, पर उसने आई वाज पुलिंग हिम. So And I हाँ don't think and it he is was hitting him from behind. तो मैंने they both should get yellow. That I made हाँ see it very मतलब clear वही in the last podcast. consistency. cons- कंसिस्टेंसी होना चाहिए. इट्स नॉट ओनली या तो दोनों को मत दो consistency होना येलो, चाहिए. वो भी फेयर ही है. I नॉट think गिविंग when येलो you But टू yeah, बोथ एंड गिविंग I येलो don't टू when know. you बोथ take इज From आल्सो the फेयर. the angle I saw was Van Dijk was kicking Havertz 2 3 times, which I didn't हाँ, बट उसके saw it पहले from इफ यू Havertz. लुक हाँ बट इफ यू लुक एट इट ही बट वाज ट्राइंग राहुल टू पुल. राहुल राहुल यूजुअली फाइट्स में अगर ऐसा होता Pulling, है grabbing is okay. पुलिंग ग्रैबिंग में Kicking इतना is कुछ नहीं not. But होता, बट see, इफ यू स्टार्ट you किकिंग are अ प्लेयर इट playing इट with कैन his गो टू अ mind. रेड See, कार्ड it यार. is very clear he's trying to annoy Van Dijk. वो हम्म. clearly he's trying to play in Yeah. his mind कि मैं इसको करूँ, इसको अड़ूँ so that he gets a foul and everything and all. And see, I kind see. I in a way I he also feel succeeded also. Havertz also succeeded in that. But I think it was very clear from Havertz to show that he was playing with Van Dijk to get into that section. So that is why I think वो
और ये बहुत बड़ा मैच है यार, इसमें तुम अगर वापस से अगर येलो रेड देते रहोगे ना तो वो चला ही जाएगा। अरे Yeah, मतलब तो येलो देना that is इतना what we सॉफ्ट हो were गया ना इतना, explaining. मतलब the volume of yellow cards per match has increased a lot. मतलब चेल्सी It गेम्स has में भी मैं increased a 2 मैच lot, हाँ, देखे। but because अरे the मतलब kicking ऐसे वाला thing is also happening ना मयूर, इतना तो किक विक कर रहा है अभी ये। अभी मेरे को पता है आर्सेनल वाले मैच में लुइस लुइस डियाज ने कुछ एक फाउल किया था, लुइस डियाज ने थोड़ा सा पीछे कर दिया बॉल, ये लोग सब आके पाटे वाटे सब आके झगड़ रहे रेफरी से, यार इसको येलो दो, इसको येलो दो, इसको येलो दो। तुम्हें इंस्टिगेट कर तो रहे हो। रेफरी भी आके बोल रहा है कि वहीं से स्टार्ट हो रहा है गेम, उससे थोड़ा ही आगे किया है पर वो यहीं से स्टार्ट कर रहा है, और उसने बोला भी कि तुम्हारा बेंड वाइट रोक तो सकता रेफरिंग था हैज बीन, बॉल। या मतलब आई टोटली, आई मीन एक्रो हाँ, दैट, आई मीन और ये इट्स ऐसा बीन ही तो होगा। मेरा इन द लास्ट मेरा पॉडकास्ट ये वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली, पॉइंट आउट ही करेंगे अभी, हर मैच में yeah. पॉइंट आउट करेगा ये क्योंकि पहले कि पहले तुम देखो, अगर रेड कार्ड कभी होता टॉसिन ना, को क्यों लाइक नहीं दिया, टैकल्स, वैंडरवेन को क्यों नहीं दिया, दैट इज नहीं व्हाट so इज but हैपनिंग राइट I नाउ। I feel कि ये लोग का ऐसा होगा कि when you give a red card in a big game right against the big opponent, that means you're laying down the law कि इनको मिल सकता है तो किसी को भी मिल सकता है ऐसा। But they did not ever followed it only, like हर मैच में दो ना फिर, लेकिन वो करते नहीं है वही तो तो इनकंसिस्टेंसी है ना। never हाँ Yeah, मतलब it's वही never तो it's a we're never discussing ending कि there's no topic. inconsistency in these matches, So and then coming back to the this is point, मेरे को ऐसा No लगता है and कि this is consistency, coming. not inconsistency, consistency, there is no consistency। yeah, there's no Sorry, consistency. sorry. एंड Or you could प्लेयर्स, say रेफरी को पता yeah, खुद पता नहीं कौन सा फाउल है कौन सा नहीं। मेरे को तो कभी उनके चेहरे पे देख के लग रहा है कि इनको दे आर यू श्योर व्हाट यू आर डूइंग ऑन द मैच, बिकॉज 2 minutes ago the player did the same thing and that was not even given a foul. Yeah. दिस इज ऑल्सो वेरी बैड। ऑल्सो वो येलो कार्ड yeah. का पता है कंसिस्टेंसी था कि 2-3 गंदे फाउल विच विल अर्न यू अ येलो कार्ड, दैट ऑल्सो इज एन हैपनिंग दीज डेज। वो छोटे छोटे फाउल दे कर ही जा रहे बट रेफरीज आर अलाउइंग इट। And I think उन लोगों ने अभी ये भी कम कर दिया है for kicking the ball away, they are saying कि हम लोग शायद हर बार नहीं देंगे लोग now. नहीं दे रहे। But जब हाँ आर्सेनल लोगी I तभी think देंगे, No, वही अदरवाइज हम नहीं देंगे। आर्सेनल के टाइम पे ही देंगे वरना नहीं देंगे। हाँ Anyways, guys, so let us talk about the match. Rajveer, what do you think? Like, I know Mayur has the अभी सबसे ज़्यादा fresh taste तो उसको ही आया न्यूकैसल का 2 बार. So I think how are they playing? I did not see both your matches, so probably you can give us an insight on how Newcastle is Decent, yeah. I playing. mean, yeah. I mean, I won't say they're playing bad. They were decent Hmm. against us. Both the matches, even the match we won, they were pretty good. They had a couple of chances which they couldn't take. But Newcastle के साथ एक ही फैक्टर है यार, when it's their home, St James Park, The it's a St. pretty James Park difficult is pitch like in very general. difficult. It's It's a tough ground to go to. Yeah, it's a very tough tough ground to ground go to to. go. Yeah. Yeah, That's applicable for every team visiting there. yeah. So I think it will be a tough game for Right. Arsenal, but Arsenal, I I I feel, think think I has think the at St सिटी James Park ड्रॉ किया which वहां पे, सिटी ने भी ड्रॉ किया वहां पे। yeah nil ओ सॉरी मैं म्यूट nil-nil. में था, सिटी ड्रॉ किया वही बोला मैं, 1-1 क्या We 1-1। so it's gonna be if we can get something out of that game now, it will be a huge boost to us, especially so if considering you we get a lost draw, our if you manage to get a draw, yeah. it will be as good as a win. मतलब नहीं वो यार decent मयूर result. प्रॉब्लम पता है क्या है? We no lost man against Bournemouth and then we drew against Liverpool, so we are already in a sort of a slump in the Premier League, so we need to No, win. I'm not saying कि That's तुमको ड्रॉ करना चाहिए, but ड्रॉ अगर हो हाँ गया yeah तो तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे बोल रहा हूँ, rather than losing. मतलब नहीं नहीं यार फिर वही मेरे को यही प्रॉब्लम हो रही है ना ये सीजन वेयर वी आर इन दैट मेंटालिटी राइट नाउ कि इट्स बेटर टू गेट अ ड्रॉ देन टू गो फॉर अ विन। अभी यार नहीं है, अब हम लोग ने कर दिए ड्रॉप, हम वी ड्रॉप 8 पॉइंट्स ऑलरेडी यार, देयर इज नो अब कुछ बचा ही नहीं हमारे पास ड्रॉप करने के लिए। बट ओवरऑल इनका कोई रिजल्ट इतना कुछ ग्रेट नहीं है, मैं अभी देख रहा किसका? हूँ लाइक न्यूकैसल का न्यूकैसल कि का लाइक ठीक न्यूकैसल है। इनकंसिस्टेंट है, इट्स नॉट ऐसा नहीं कि अच्छा खेल हाँ रही है, चेल्सी ने इनकंसिस्टेंट हराया रिजल्ट चेल्सी ने उसको हराया, फिर ब्राइटन भी हरा के बैठा है, एवर्टन ड्रॉ करके बैठा है बट दो इट वाज एन वही वही अवे वही मैच। वही हाँ, तो उनका वो न्यूकैसल मतलब मतलब एकदम ड्रॉ किया है, फुलम हरा के कंसिस्टेंसी है बैठा है। उनका. मयूर तू अगर आर्सेनल का भी वी आर एट अ पोजीशन, ठीक है वी आर सीजन का स्टार्ट हुआ है, आर्सेनल का भी तू देखेगा तो वी हैव ड्रॉन 3 मैचेस, ठीक है वी हैव लॉस्ट 1 इन द 9 मैचेस, तो वी हम लोग को वी नीड टू गेट बैक टू फॉर्म नाउ, मतलब वी कैन नॉट कीप डूइंग दिस अप एंड डाउन। यस न्यूकैसल इज अ टफ प्लेस टू गो टू बट दिस इज अ टाइम वेयर वी हैव टू स्टेप अप एंड शो दैट वी आर No, no, definitely. कंटेंडिंग टू द टाइटल। Points चाहिए तो So तुमको you this have to is go for a win. I mean, exactly we have to go and win. that's a given. And Newcastle is the perfect game when you go and win and send a message कि यार गेब्रियल okay इंजर्ड है just कि प्रकट होने वाला है? Gabriel शायद नहीं खेलेगा। It's so we'll talk about the team. It's gonna be Raya. बोल रहे टिम्बर आ जाएगा। So it's gonna be yeah White and Saliba as centre backs
and then left पे we'll have Calafiori. नहीं, Calafiori भी injured हो गया है. So we will have probably Kivior और किसने start किया था last time? नहीं, पार्टे so तुम्हारा basically, राइट बैक था. आर्टे राइट बैक था ना लास्ट गेम. अरे Varun, you saw the EFL Cup match. You saw the game against Preston. नहीं, I did not. So basically, Timber, the plan was to give 45 minutes to all these players who are, not match fit or coming back from injuries. So Timber is Right. fully fit and fine, and he played 45 minutes. He got subbed on at halftime, and he's ready to go. So he will start at left back. Right back पे Ben White is fit to go. Centre backs में Saliba and Kivior हो सकते हैं. So that is quite a Okay, makes possibility. Kivior was amazing midweek. He had 2 great assists, and defensively he was very, very good. So I won't be it's just surprised if Preston, Kivior so gets a chance. it's just Preston, so we will not Yeah. be very. But considering the injuries, we don't have a proper left-footed centre It's back. just a good So, confidence boost for him to start the match and then to play. Yeah. So at least he'll be more match fit. lot of players came on actually. Saka, I was surprised to see Saka coming on. Havertz came on, and there were a few changes which Mikel made so that players, get that rhythm of playing again. So midfield में क्या होगा? That tactical will be a big changes. question. So main is if Ben White is still a doubt, right? A party will continue at right back, and midfield will be again of Rice, Merino, Rice, and How is Trossard. Ben White injured है? मैन वाइट का बहुत last समझ match नहीं आ रहा है. he कुछ injured तो था. प्रॉब्लम चल रहा है. कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा हाँ, है he उसका. was subbed on at last game also. तो कुछ recurring का injury चल रहा है. What was that? What was Okay, that? अब मेरे को इसके डर घर लग के रहा है. अब ऊपर मेरे से को लग गिर रहा है हम गया. लोग इंडिया में नहीं है. यहाँ के छपरी लोग हैं ना, करके जाना. And midfield, Odegaard is back on training, so he's back to maybe there's an outside chance he might be back this weekend. Okay. Or Saka is fully fit and fine. Havertz is fit and fine. Martinelli, Trossard. So players are coming back from injuries. This is good, and that is the reason I'm more confident. कि Newcastle ऐसी जगह है, you have to first 15-20 minutes just calm the crowd down. Yeah. And try to nick 1 or 2 goals. हम लोग जब लास्ट 1-0 जीते थे वो भी कुछ सेट पीस गोल था गैब्रियल का. So it's not Right. going to be very free-flowing football which you can expect at a place like Newcastle. But we have to take our chances, which is key in away matches. So Yeah. and after watching Newcastle का record apparently is very good against London teams. Chelsea को उन्होंने हराया, Spurs को उन्होंने हराया था. So they've been Plus, on a pretty decent run. just if you forget about the London teams, our record at St. James Park is not that great. So we have to Yeah. वो भी हमारे अगेंस्ट सामने ऑल्सो उनका- जो आर्टेटा भी थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है बीच में, हाँ. द सेकंड हाफ. मतलब मेरे को मयूर वही डर लग रहा है कि if we do end up scoring let's say a goal in first half, then second half I have this feeling Arteta will go back to his park the bus, time wasting tactics or वो सब, which is But I'm not more good. confident. But I'm more confident अगर हम पाक द बस करेंगे 1-0 होने के बाद we will get the win. That's what I पर think. Rajvi, this season it's not worked out if you see. Maybe. I don't know, It's but not- I feel more confident right now at St. James Park. अगर हमने Because 11 वो मैन लोग- रख दिए ना पीछे तो नहीं मार पाएंगे. उनका अटैक इतना पोटेंट नहीं है. There is Isak, there is Gordon और यही है जोलिंगटन और ये सब. But उनका अटैक इतना नहीं अच्छा है कि वो लोग Yes, 2-3. Tonali. चेल्सी वाला गेम मैंने देखा apparently उन्होंने they took chances what Chelsea's mistakes were and Chelsea did not take their chances. Chelsea had 3-4 good chances to score. उन्होंने वो chances ही नहीं लिए. I think Felix ने 2-3 अच्छे चांस मिस किए. There was one chance I forgot कौन था तुम्हारा प्लेयर, he missed it. And उन्होंने तुम्हारा एक own goal हो गया बैडिया शील का. So which was very unlucky. I think Chelsea were very unlucky in that game. I saw the highlights. It was yeah. Yeah. मतलब स्कोर कर सकते थे हम लोग, मतलब लिए नहीं कर चांसेस. सकते थे. बहुत अच्छे chances थे. Makes sense. Yeah. And this What is will be the scoreline? Yeah, we so have what to win is this the game, I feel, to prediction here? get back to. I think I'm predicting a 1-0. We have to get back to winning ways. We drop points at Yeah. Bournemouth and Liverpool. You cannot afford to drop more points in a title race. So I'm Right. expecting a win, and I think we will win. ऐसा लग रहा है. Let's see. Away from Yeah. ये लोगों ने सिटी को ड्रॉ किया था. मतलब but But I Mohit, that think- is not वही बोल रहा है कि we have to, this is the game where we cannot afford to drop points anymore.
नहीं तो यार we'll be too far behind. The City is not going to lose their match against Bournemouth. ठीक And है, we they look ready now, I feel. yeah, हम ये मैच थोड़ा सा लास्ट 2 मैचेस देख के बाद आई फील वी आर मोर yeah, we had a कमिंग बैक great टू दैट performance रिदम. against Liverpool. Yeah, अगर I feel यस, दो इंजरीज नहीं होती to Timber and Gabriel, जीत जाते probably हैं. हम लोग शायद निकाल लेते हैं, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है. हम्म. I like this newfound confidence on Arsenal fans. अच्छी बात. Sure. हम लोग तो मतलब मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग प्रीमियर लीग जीतेंगे, मैं तो चेस्ट के साथ बोल रहा हूँ. Varun has been always been confident. मेरा थोड़ा डाइसी है because of injuries and refs. I think मार्च वरुण में ने ये मार्च सोच में लिया जीत है मार्च में कि जीत जाएंगे लोग. पर ये I think. अरे देखो दिसंबर जैन फेब मार्च नहीं, सब में जीतेंगे हम. मई में देखो नहीं है ना जीतेंगे कि बस. फरवरी में अभी लिवरपूल तुम लोग को जीता एनफील्ड था. आके हम लोग वहां पे बजाएंगे, टेंशन मत ले तू. फरवरी में वरुण ऐसा लिवरपूल बोल जीता था. मेरे को लगता है तुम्हारा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं, इसलिए मार्च में बोल रहा हूँ. है वरुण But बोल do you रहा know, है Rahul, Liverpool hasn't beaten Arsenal in last 5 Premier League games. Don't you think Yeah, I that's too know. long? Long तो time ये since Liverpool. ये मैं तो लास्ट पॉडकास्ट में बोल रहा था, इट वाज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू बीट आर्सेनल. हाँ, with Yeah. the injuries इससे and वीक everything. आर्सेनल मेरे को लगता नहीं है हो सकता था, बट ठीक है, वी हैव बीन वेरी शिट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हमारे भी अप्स एंड वरुण डाउन. इतना Mayur, what is your prediction for the game? ड्रॉ यार 1-1. न्यूकासल Okay. आगे टफ फॉर आर्सेनल. Tough match, yeah. Rahul? आई डोंट नो. एंटनी गॉर्डन इंजर्ड है, एनी आइडिया? नहीं खेल रहा Fit है. है. He's playing. अगर Fit. वो खेल रहा है तो Isak also fit. 2-2 ड्रॉ. Bruno G, 2-2 Joelinton draw. सब fit है. मोहित, इंटरेस्टिंग. यार मेरे को लगता है पता पहले है तेरा वो वरुण इतना कमेंट मार दे पहले, कॉन्फिडेंट तू क्यों जो है? तेरे को 2-3 बार कब टोका ना मैंने. कब से बोल रहा हूँ. जहाँ मुझे कर रहा था मैं देखा तुमने क्या कर रहा क्या था. क्या क्या क्या? वो कमेंट मार रहा था, वरुण मैं बोल उसको रहा मार है टोका. कॉन्फिडेंट क्यों है. वरुण बोल रहा है 10 साल मैंने ये करके देख लिया, नहीं हम लोग नहीं जीतेंगे. ऐसे कि मानता है ये वाला भी देख ले करके देख. इतना जीतेंगे हम लोग, तो जीतेंगे हम लोग. इसलिए वो दिखा रहा. अच्छा नहीं, वरुण ये टैक्टिक 10 साल पता है प्रॉब्लम क्या है कि मैं पूरा साल बोलता हूँ कुछ होने वाला नहीं है, मेरे को पता है ये टीम जीतने वाली नहीं, और नहीं जीतती है. उसके बाद तुम मेरी 3 महीने गांड मारते ही हो. ठीक है, इस बार तुम लोग गांड मार लेना ना, मेरे तो खुश होके फिर मारो. तो समझ रहे हो, तुम लोग सब टीनेजर्स थे जब आर्सेनल लास्ट लीग जीती थी. तू तो पैदा भी नहीं हुआ था साले जब चेल्सी ने उससे पहले जीता था. हम लोग टीनेजर्स थे जब हम लोग को लगा लिवरपूल जीतेगा, और हमारी शादी हो गई, वाइफ घर पे आ गई, और फिर हम मतलब लिवरपूल जीती. और सिर्फ देखने हमने भी नहीं कितना मिला. वेट किया है. और देखने भी नहीं मिला. देखने मिला. शादी के बाद नहीं, तुम्हारे क्या फैंस वो को भी जीतेंगे. मैं सोचा एनफील्ड के फैंस जो 30 साल से वेट कर रहे थे बेचारे, जिस सीजन में जीते वो कोरोना लोग के स्टेडियम में थे भी नहीं. वर्स्ट और पार्ट. स्टेडियम पहुंच गए थे. नहीं, सब अंदर ऊपर आने चढ़ के गए बाद पर भी ना कोई बस रैली कर पाए तुम. बस हाँ, रैली हुई, बस वही तो बोल रैली रहा हो हूँ कि सकता है. ऑब्वियसली वो सच अलाउड अ नहीं सच था. अ वही मी एंड राहुल हैड डिस्कस्ड दिस कि बॉस, जो जर्नी जो होती है ना ऑफ दैट एंटायर सीजन वेयर यू आर एंड द वे लिवरपूल हैड प्लेड दैट सीजन, दे न्यू इन जनवरी फेब हम लीग जीतने वाले हैं. हाँ ठीक है, फेब एंड में देन दे जीत लॉस्ट. गए. हाँ, फेब या में यू वन जीत गए हम प्रॉब्ली, लोग. जीत गए लीग. या सो Last 25 start था पॉइंट्स वो तो. 25 पॉइंट्स आइड थे हम लोग. एंड इट्स सच एन So एंटी that is क्लाइमैक्स what कि it, guys, that is what it takes to beat City. You have to be perfect. इतना डर खौफ फैला दो उनके ऊपर के 20 पॉइंट पीछे नहीं पकड़ने वाले हो, बोला था. हार मान लो. यही चीज एकदम स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि इसने तुम्हारे बोला था कि वरुण अगर 15 5 पॉइंट है पॉइंट तुम ये लोग वजह 15 है. के 15 ले लो. तूने को बोला हम था लोग 15 8 के पॉइंट्स 15 ले लो. 24 पॉइंट्स लेके बैठे थे, हम्म. और वो नहीं, करना पर ही था वो टाइम में. राहुल मैं अभी बोलता लास्ट सीजन अगर हम लोग फुलन से नहीं आ रहे होते हम लीग जीत जाते. तो ऐसा भी नहीं है राजवीर कि हम Doesn't लोग को work that 25 way, पॉइंट यार. It आगे doesn't चला. work that way. Why doesn't Doesn't work work that way? that Why way. doesn't It why doesn't doesn't work it that work? way. You पता है कोई भी टीम ले लो, don't सिटी need भी to ले लो, you they don't need will to drop win City points यार. You against. don't need to beat City. हाँ, but the point is, एक आधा गेम ऐसा होता है, बस it should not be too much. Like एक दो गेम पर are आप allowed. पर कितने गेम्स किए हमने. पर वो क्या हाँ. वो मैं तेरे को बोलता हूँ वरुण, और वो राजवीर, सिटी क्या के होता है. सामने पेप का draw is रिकॉर्ड like a loss. पेप का रिकॉर्ड अगेंस्ट द टॉप 6 टीम्स, दे वर बॉटम विद यूनाइटेड. उन्होंने खाली Yeah, यूनाइटेड yeah, के yeah. 6 पॉइंट लिए, लिवरपूल से उन्होंने 2 हाँ. पॉइंट लिए, हमसे उन्होंने 1 पॉइंट लिया. ठीक है, चेल्सी से 2 पॉइंट लिए. चेल्सी 2 बार ड्रॉ, चेल्सी इतनी घटिया खेलती थी लास्ट सीजन तो भी उनको 2 बार ड्रॉ किया उन्होंने.
ठीक है, खाली ये यूनाइटेड वालों ने 6 अच्छा पॉइंट दिए उनको। स्पर्स वाला मैच आई रिमेम्बर, मैंने यार ईएफएल कप मैच देखा सिटी वर्सेस स्पर्स। फुल टाइम पे क्या फ्रेंडली माहौल है, सब लोग हंस रहे हैं, पेप हंस रहा है। इट्स लाइक दे हैवंट लॉस्ट। बेंच इट्स लाइक लास्ट ईयर बेंच के पे भी वो हंस नो रहे दे, थे। या हाँ एंड इट वाज लाइक लास्ट ईयर का वो थैंक यू बोल रहे कि दिस इज फॉर यू, तुम लोग जाके कैरेबो कप जीतो, थैंक यू फॉर लूजिंग लास्ट ईयर एंड वी वॉन द टाइटल। वो सेकंड लास्ट गेम था पता है, स्पर्स अवे, एंड हाँ Son missed that chance. So it felt so friendly and I was like इनमें rivalry है ही नहीं। इनफैक्ट स्पर्स फैन मेरे को लगता है पूरे साल सिटी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यार, दैट मेक सेंस ना। Yeah. सिटी का अगर तू स्पर्स के प्लेयर्स को सुनेगा ना, तो वो लोग एक ही चीज बोलते हैं। स्पर्स के फैंस को सुनेगा, वो लोग एक ही चीज बोलते हैं कि उनको बोलेगा तुम लोग चैंपियंस लीग जीतोगे अगर आर्सेनल विंस द प्रीमियर लीग, तो बोलेंगे नहीं हमको नहीं जीतना। We don't want to win. आर्सेनल नहीं जीतनी चाहिए। उनका दिमाग में यही है। बट और तुम्हारा मैनेजर आके बोल दे कि ये क्या शिट मेंटालिटी है क्लब पर की, तो स्पर्स हमेशा से बजाते ही आ रहा है ना सिटी का। आई थिंक लास्ट Exactly. they were very good Last year ही नहीं बजाए। लास्ट सीजन ही वो नहीं लोग बजाए। हारे थे सिर्फ, एंज And वरना तो ये fans लोग हराते celebrated. रहते हैं। करेंगे। हाँ 2-1 हारने के And बाद fans सेलिब्रेट कर रहे थे, celebrated. फैन सेलिब्रेट कर रहे बट थे। वही एंज वही ना, एंज बोल रहा था कि क्या चूतिया बिहेवियर है, मेरे को आई डोंट मतलब मैं लाइक तेरे को दिस। बोलूं, यू सी द तो बोलने वाली बात है डिफरेंस। मोहित, वो पीछे उनको खुद ड्रेसिंग रूम में चिल्ला रहा होगा, यू गाइस डिड अ ग्रेट एंज जॉब। को क्या लेना नहीं नहीं देना नहीं, है, एंज नहीं आरसेनल बोलेगा, जीते एंज या बोलेगा, यार यार, बस आ गया। एंज को क्या फर्क पड़ता है, राजवीर, वो थोड़ी ना राजवीर तेरे को स्पर्स क्या बोलूं सपोर्टर कि है। यूनाइटेड के फैंस वांटेड आर्सेनल टू विन लास्ट सीजन, ठीक Yeah, है, बिकॉज दे डिड नॉट वांट सिटी टू विन द लीग। City to win. एंड बट यूनाइटेड एंड आर्सेनल का मैच भी ये उसी राज रन में को, था, if you remember, ये राज, ठीक है। why do we want you guys to lose some time or the other is because of this Dilulu that you guys get into. नहीं नहीं, अरे मेरे को कोई पॉइंट फिनिश करने दे। सो आई वाज सेइंग कि I agree. यूनाइटेड फैंस वांटेड आर्सेनल टू विन, एंड बट जब वो मैच आया हाँ, ना, तो उसमें भी दे वर इन अ डबल माइंड कि यार आर्सेनल को हम्म, जीतना है, यू नो, कि मैं क्या शुड वी गो द मैं मैच। क्या बट चूतिया आई हूँ जो टेल यू, तुमने बोला है कि यूनाइटेड आर्सेनल प्लेड अ वेरी गुड मैच। बहुत डिफिकल्ट हमने वो yeah, मैच जीता था, yeah, एंड फैंस वर डिसअपॉइंटेड, दे वर एंग्री एट ईटीएच दैट दे लॉस्ट द मैच, बट yeah, they were not celebrating कि भाई हमने चलो अभी आर्सेनल को चांस हाँ, दिया। they were not celebrating it like that, जो yes, स्पर्स के फैन, वो it just shows the mentality of that shit club, और यार कुछ वो नहीं। वाला कि भाई क्या वो वाला exactly. मैच तो इतना ड्रामेटिक था, हारे उसके बाद वो मैं ग्राउंड फ्लड हो गया हमारा। ये सब बारिश हाँ, हो गया, पानी लीकेज हो गया। yeah, yeah. ओल्ड Anyway, ट्रैफर्ड so इज गोइंग yeah, डाउन। I am yet to give my prediction. By the way, do you guys know we're linked with Paul Pogba on a free transfer? You should take him. He will ruin Yeah, your yeah, yeah, he will yeah, ruin yeah. your culture. Actually राजवीर He will राजवीर उसको curse लेके the उसको club. बोल, हमारे ग्राउंड के नीचे कुछ कुछ गाड़ है, उसका रीजन है हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बैड जूजू चल रहा है, मे बी हाँ, दिस बैड जूजू कैंसल्स चल, इट। हाँ, Take him. maybe that can No, work. no, take him. I tell you what, he's an amazing player. Okay, कोई डाउट नहीं था किसी को. Problem Shit is his person है, attitude. Attitude is so bad. बेकार It's so एटीट्यूड है। bad. He's Dude, and what he Balotelli does is 2.0. he will pull in all young players towards himself because he tries to be cool and shit. और उसमें तुम्हारे कल्चर की लगती है. जोसे पर ऐसे भी मरीनियो तुम्हारे में काले लोग बहुत है ना, तो हाँ सब बिगड़ भी जाएंगे, साका भी बिगड़ हाँ, जाएगा। जोसे मरीनियो तो said चला that साका he's a बाली बन के virus. आ रहा है। पार्टी भी हाँ, ऐसे डांस कर रहा है। अबे Like, जेसस ने बीच मस्त। में हेयर कट देखा था, उसने हेयर स्टाइल बनाया था, Yeah, किसके हाथ में dreads, बना yeah. के। But the हाँ, point by is, the way, Aubameyang, Lacazette, Pepe, ये सब कर बेन रहे थे, वाइट उन भी तीनों को ब्लैक है। निकाल दिया। कितने ब्लैक्स है तुम्हारे ए में? बेन one वाइट more भाई, thing. ब्लैक नुनो है, टवेरेस क्या ये ब्लैक है। मचा रहा है इटालियन लीग में। 7 असिस्ट थे उसके 8 सात गेम में। assist एक और चीज, आदित्य ये सीरियसली लिंक्ड विद पॉल पॉगबा? if you guys, Yeah, ओह माय गॉड। मोहित तूने तेरा एक और चीज, प्रेडिक्शन नहीं दिया यार। राजवीर खुश हो रहा है. आई तो वांट देम टू गेट हिम बिकॉज उनको पता चलेगा कि व्हाट इज नहीं, पॉल मैं पॉगबा खुश हो खुद ही नहीं रहा हूँ। नाम का बैड जुजू I है. don't want him. I don't want Paul वेरी Pogba. बैड। नहीं He's नहीं, I very मोहित I bad. would इट्स never वेरी want a बैड। guy like One Paul guy. Pogba at my club. guys, 2-2. 2-2, okay, yeah. So my लेकिन prediction what I for was, this match, हाँ खत्म कर ले तो फिर मैं बोलता हूँ. पॉल पॉगबा का अभी रेंट बाकी है मेरा. अच्छा. yeah, so I am expecting a 2-0 win against Newcastle. I don't think they'll score against us. हम लोग जीतेंगे ये मैच. Yes. Yeah, Mohit, continue with your Paul Pogba rant. एक ओवरलैप पे एक ये आया था. ओवरलैप पे नहीं, रियो फर्डिनेंड और वेन रूनी का कुछ तो आया था. उसने बोला था, वेन रूनी सेड, उसने बोला कि आई सॉ लिंगार्ड एंड पॉगबा डांसिंग yeah, आफ्टर बीइंग yeah. सिक्स्थ. ऑलराइट. Hmm.
तो वेन रोनी को उसने फोन किया कि ब्रो व्हाट इज हैपनिंग, तो के डूड आई कांट टेल यू बट दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द स्क्वाड and Pogba is a ringleader for this. So I am very happy you get it. It's okay. All right, Mayur. See you, bro. See you on Sunday. ये बहुत चुनाव करना है क्या मयूर? कर सकते हैं। चलो guys, कितने बजे? मयूर is also संडे रात को 10 बजे ना? 10 बजे। कर सकता है, बहुत चुनाव करते हैं। Hey, guys, we are also planning to end the stream. Just 2 matches के quick predictions अगर देते हैं, so we'll end the stream right here. If Mayur, you can stay. Yeah, I'll stay back. Yeah, so we just need to discuss the last 2 matches. That is, first we'll obviously discuss the Bournemouth versus Man City. Like, are we expecting something to happen like what happened with like Bournemouth played very well against us, I would say. We did not get out of our half that match, and yes, we had a red card very early. But City, I think, हो गया उनने जो बकचोदी कर रही थी स्पर्स के सामने कर ली. I don't expect them to win. एक ही फैक्टर है इसमें, सिटी में. हाँ, I was coming to that only. KDB नहीं है, Savinho injured है. Right. So they have Matheus Nunes as a winger. Savinho went off really badly, huh? He was pulled off. And Haaland का form, I think, is totally dependent on KDB and Rodri being there in the team. So I think City will win, but it will be a close again. मतलब 2-1 types होगा, मतलब high scoring game नहीं होगा. देखते हैं, मतलब that's what I am predicting basically. मतलब if you see City this entire season, especially after the Arsenal game, बहुत ही dicey खेल रही है. Dicey, they're scraping through games. I mean, मतलब वैसे ही हो रहा है. Scraping through games because they have the players to do that, but convincing wins नहीं है. Man, they're conceding goals. मतलब that is the most shocking thing. They're conceding goals left, right, center खा रहे और easily. जैसे Wolves के सामने Wolves बहुत बार घुस गई थी उनके हमने. और मयूर ने बहुत स्मार्टली ट्रिपल कैप्टन बनाया था आप लोगों ने. थिंकिंग उसको बनाना चाहिए था एम्बुएमो को. 45 पॉइंट्स दिए थे ना उसने. 45 पॉइंट्स एम्बुएमो. एंड ये और विजय दोनों ने ट्रिपल कैप्टन बनाया था उसको, और दोनों के लिए. चलो गाइस, we'll move on to the prediction for this match. See, like 2-1 for me. City. 2-1 City. 2-1. 2-1. Rajveer. Yeah, 2-1, 3-1 City. Rahul कहाँ गया पता नहीं. Yeah, I also predict probably a 1-0 or a 2-1 is the match. The only hope I have is they drew at Aston Villa, so शायद कुछ momentum लिया हो वहाँ से. But then they lost to Leicester, so don't know. Yeah. We'll move on to we'll skip Rahul this time. 0-2. So Aston, guys, 0-2. 2-0. Man City. Yeah. So Aston Villa versus Spurs. Spurs यार मेरे को समझ ही नहीं आती ये सीजन. I don't understand. By the way, guys, unpredictable team. Before we take on Spurs, guys, हमारे 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, बट हमको अभी तक एक स्पर्स फैन नहीं मिला है जिसको हमको लेना है. We've been telling you guys, please tag a Spurs fan who can come and defend his club. जितना गाली देते हैं. Please join us. उनको रुलाएंगे नहीं, लेकिन आ जाओ. हाँ, please. तो please join us. And 200 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं गाइस, बट स्पर्स फैन नहीं मिला यार. स्पर्स के इंस्टाग्राम पेज पे भी सिर्फ 3000 फॉलोअर्स ही है. मतलब पूरे इंडिया में जहाँ पर 100 करोड़ की आबादी है वहाँ 3000 स्पर्स फैन. उसमें से 100 तो ये बाहर के ऑफिशियल्स ही होंगे जो एक दूसरे को फॉलो कर देंगे. स्पर्स लंदन, स्पर्स फ्रांस, स्पर्स ये प्लेयर्स होंगे, उनके फैमिली होगी. वैंडर इनका भतीजा फॉलो कर रहा है. वहाँ पर सॉन नमस्ते बोल रहे हैं और यहाँ पर लोग बोल रहे हैं फक ऑफ. नमस्ते इंडिया. Hello guys, so like, do you guys like Spurs? Do you think Spurs can go and win at Villa? यार दोनों ही क्रिस्टल पैलेस से हारे. I don't know what they're doing, what is Emery doing, and दोनों का फॉर्म बहुत ही गंदा है. It's going to be a very unpredictable game, but I think Aston Villa के होम पे, so I'm just edging it 1-0 or 2-1 to Villa. एमरी का गया हाइप सारा. हाँ गया. वो भी चैंपियंस लीग में अच्छा कर रहा है भाई. बायर्न म्यूनिख को हरा दिया और क्या चाहिए उसको. He is still top of the table. 3 टीम्स को हटाया. बोलोनिया, बायर्न और
एक और अच्छी टीम को हराया उसने भाई. I think Leipzig को नहीं. Not sure. Leipzig was City. Yeah, sorry. नहीं. I don't remember. But yes, इनको हराया Villa guys, is. by the way. But let's see यार. मतलब I think Villa will win this match. But Spurs का कुछ पता नहीं है यार. ये लोग पता नहीं क्या By कर the रहे way, हैं first half में. one Young boys one कर रहा है, young boys. Young one boys. one surprise fixture, guys. Before Amorim takes over United, his next Champions League match is against City. Oh damn. Yeah, मतलब that will so will be interesting. interesting match. Yep. कुछ इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है. Sporting versus सिटी City. पेलने वाली है. सिटी पेलने वाली है. ये सीजन सिटी इतना कुछ देख great लेना. नहीं है. 2-0, 3-0 City to is not City that for great. match. मतलब राहुल पता है ये लोग इतना इतना अगर ये वाला लीग भी वो लोग जीत गए जिसमें दे आर नॉट प्लेइंग टू वेल ना तो शर्म आनी चाहिए हमारे दोनों क्लब्स को यार. मतलब we still हम can't. चलो, लोग तो है ही यार. बेशरम यार. हम लोग के तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहे. क्या तो जीतने की बात कर रहा है. हम लोग Guys, 20 साल thank से you नहीं so much. जीते प्रीमियर लीग. हम तो 20 साल से प्रीमियर लीग नहीं जीते हैं. Guys, thank you so much for joining in. Happy Diwali, happy holidays, and Happy Diwali, guys. great Have weekend. fun. Stay with See your you after this family. Have weekend. fun. Yeah. Bye, guys. See you. Bye See you bye. guys. Bye. Yeah.